also extensive, and it will take our 3 to 4 classes even. So chromatography, actually chromatography is? Chromatography is a laboratory technique that separates components within a mixture by using differential affinities of the components of a mobile medium and for a stationary absorbing medium through which they pass. So that will mean that actually chromatography is used to separate components within a mixture. So that's why we use chromatography. So basically it is like to separate components within a mixture. So it is used to separate components within a mixture. So this is why chromatography is used. And basically, it is based on differential affinities. So these components will have different affinities for the for a mobile medium and for the stationary medium. So they will have different affinities for the stationary medium. So these components will have different affinities, and based on those affinities, these different components within a mixture could be separated out. So they can be identified, they can be distinguished from one another through these differential affinities of these components, and they will actually they will have affinities for the stationary and that is the adsorbing medium actually. So if you can see this one, in the start we will be having a mixture of components, a mixture, and we can then separate them out, like each of the component can be separate out. And why we need them, why we need to separate them? To analyze something, to identify the component, to purify some component, to quantify some component. So this could be one of the objective. One of the objective could be analyze something, to identify some protein or some component, to purify that or to quantify that. So one of the objective could be of these are 2 or 3 objectives could be to separate the components. And for this separation, we will be using chromatography, and this will be based on the differential affinities of these components. So these components will have differential affinities for the stationary medium, and with that stationary medium, it will adsorb on that medium, and through that it will have it could be separated out from one another, and the reason could be one of these. um, Separation of components in a simple is in a sample by distribution of components in 2 phases, and the first of the phase is stationary phase, and the second one is mobile phase. Stationary phase could either be solid or liquid, and that could be fixed. So fixed on a column. So this stationary medium could either be solid or it could be liquid, and that is fixed on a column or a capillary tube or a plate or a sheet. So this could be one of them. So this, and they are actually inert material. So the solid or liquid, the stationary phase, they are fixed on a column or a capillary tube or a plate or a sheet. Actually, they are supporting material. They support the solid or liquid, and for that is used as a stationary phase. And the next one is mobile phase, and the mobile phase could either be liquid or it could be a gas. So what we have talked about that chromatography has actually two components. Two components are, we will be calling that 2 phases, and through these 2 phases a mixture could be separated. And the first of the phase is stationary phase, and the second one is mobile phase.
So stationary could either be solid or liquid, fixed on the support, and the mobile phase is can either be liquid or gas. Am I clear on this slide? Yes, sir. Yes, sir. Who will explain? Like somebody volunteer. सर मैं करूँ? Ji Rabia, please. सर यहाँ पर आपने सबसे पहले बताया कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग सेपरेशन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। और सेपरेशन कैसे करते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट एफिनिटीज़ होती हैं कंपोनेंट्स की, जिसकी बेसिस पे सेपरेट होते हैं। ये एफिनिटीज़ जो होती हैं ये मोबाइल फेज में डिफरेंट बिहेवियर होता है इनका, और स्टेशनरी फेज में डिफरेंट होता है। इसमें जो है वो दो तरह के जो ये फेजेस हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में जो है वो हमारे पास सॉलिड या लिक्विड फेज आ जाता है, और इसके अंदर ये इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो या तो कॉलम होता है, कैपिलरी ट्यूब हो सकती है, प्लेट या शीट। लेकिन जो मोबाइल फेज होता है इसके अंदर लिक्विड या गैस होते हैं और ये फिक्स्ड नहीं होता। हम मिक्सचर के अंदर जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं इसके अंदर जब कंपोनेंट सेपरेट करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि या तो इसमें हमने कंपोनेंट्स को एनालाइज करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, प्योरीफाई करना होता है, या हम इसको क्वांटिफाई करते हैं। Exactly, exactly. So one thing we need to add is that in the chromatography technique, we have two parts. The first part is every chromatographic technique. In almost every chromatographic technique, there will be two parts. The first one will be stationary part, and the second one will be the mobile phase, means stationary phase and the mobile phase. And these two combine together to form a chromatography technique. Am I clear? And they could be like solid, liquid, or they could be Yes, this sir. could be liquid or gas. Okay, and next to it is so uses of chromatography to either analyze, examine a mixture, its components, the relation to one another. So why we use chromatography? To analyze a mixture, to identify a component, a mixture or a component, one of the component of the mixture, to purify. So we need to purify a specific protein out of a mixture. So to purify, we use chromatography. To quantify, like we need to quantify some protein or something else out of a mixture. Like I need to quantify some specific enzyme within a mixture or within the blood. So I will use chromatography. And these are actually the uses and applications that can be applied in pharmaceutical companies to determine the amount of each chemical found in a new product, in hospitals to detect blood alcohol levels in patient bloodstream, in law enforcement agencies to compare a sample found at a crime scene to samples from suspects, in environmental agency to determine the level of pollutants in water supply, in manufacturing plant to purify a chemical needed to make a product. So these could be the applications. They are not limited, but they are some of the applications of the chromatography, like in these different like in different agencies and in different settings the chromatography are used. So chromatography, the stationary phase, like we have already talked about that there are two phases within the chromatography technique. The first phase is the stationary, and the second one is the mobile. And the stationary phase is usually in a column, like we have talked about that. This phase will be fixed in a column or in some other support, but take other forms such as planar phase. So flat sheet could be used instead of column. So the column is usually filled with some stationary phase, some stationary like the substance used for the stationary phase. So and there are certain types of chromatography, and these types are too much important. Like you will be listening about these types actually too much, and you will these are too much like famous. And the first of the type is gas chromatography. Gas chromatography actually separates gaseous substances
based on adsorption or partitioning. Partitioning, the word partitioning is important, in a stationary phase from the gas phase. So what it will separate gaseous substances, like we need to have a mixture of gases, and we need to separate out one of the component, like in the volatile substances. So based on adsorption, so what is the basis for that? It will they will adsorb or partition in the stationary phase. So this will be actually the mobile phase, and it will bind to, it will adsorb on, or it will be partitioned in the stationary phase from the gas phase. And like the mobile phase is actually the gas phase. So the gaseous substances could be separated. And this type of chromatography is known as gas chromatography. And the next of the type, and that is more famous, and that is liquid chromatography. And the liquid chromatography is a combination or combo of different types of chromatographies. And it includes, the liquid chromatography includes techniques such as size exclusion chromatography, and their separation based on molecular size. So first of the type in the liquid chromatography will be size exclusion. So that will mean the liquid phase is used, and but the basis is size exclusion. So separation based on molecular size. And the second one is ion exchange, that is separation based on charge. So this is the, as the name indicates, this indicates the size, the molecular size. This indicates the charge. So based on the charge, the chromatography is done, and based on the size, so the components can be separated out, and based on the charge, the components can be like they can be separated. And the third one is high performance liquid chromatography, HPLC, and that is based on adsorption or partitioning from a liquid phase. So in liquid phase is all are used in all these settings, because this is a liquid chromatography. So a liquid phase is used, the mobile phase is used, and the liquid mobile phase is used. So but here the high performance liquid chromatography, pressure is used, and in these and no external pressure is used. Here external pressure is used. This is more fast, more robust, along with thin layer chromatography and a planar form of liquid chromatography. So here the planar form of the support means here no column will be used. So a thin layer of a thin layer of the stationary phase will be used in the planar, that is the planar support, and that will be used in thin layer chromatography. So we will be talking about all these in detail later on. And the fourth of the type is electrophoresis. We have already talked about this in detail. So separation in an electrical gradient based on the sign, means the positive or negative, based on the sign and the magnitude of the solute charge. So the magnitude, how much is the solute, or what is the sign over there, like what is the charge there. So based on the charge and the magnitude, the separation is done. So these are four different types within liquid chromatography. So when we were talking about gas chromatography, we are talking about the stationary phase, and the that will be the mobile phase will be gas. But in the liquid chromatography, we have four different types. And the first one is size exclusion, the second one is ion exchange, the third one is high performance liquid chromatography, and the fourth one is electrophoresis. TLC also comes under liquid chromatography actually here, and that's it. Who will explain this? Anaya Manzoor. Anaya is there.
Anaya, can you hear me? महक तौफीक महक जी फातिमा रमजान बता दें. सर इसमें आपने बताया कि क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स क्या हैं और स्टेशनरी फेज इसमें होता है जिसमें हम एक कॉलम के अंदर कोई भी लिक्विड या गैस को फिल करते हैं जिससे जिससे वो रेफरेंस यूज करते हैं और फिर सेपरेशन करते हैं. और फिर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है जिसमें गैस है और गैस क्रोमेटोग्राफी में हम गैसियस सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं और इसमें जो मोबाइल फेज है उसको गैस फेज कहते हैं हम. फिर है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर 4 टाइप्स हैं. साइज एक्सक्लूजन है जो मॉलिक्यूलर साइज की बेस पे सेपरेट आउट करती है. और आयन एक्सचेंज है जिसमें आयनिक आयनिक बेसिस पे हम सेपरेट आउट करते हैं. और फिर HPLC है जिसमें हम सेपरेट आउट करते हैं जिसमें हम थिन लेयर यूज करते हैं. और फिर लास्ट हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने पढ़ी भी है पहले उसमें हम इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट यूज करते हैं. वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव कैथोड और एनोड की बेस पे हम सेपरेट करते हैं. ठीक हो गया. ठीक है. And next to it is so these are some visual explanation for some of the types of chromatography. And the first of the type is ion exchange chromatography. We have already talked about that previously. So in ion exchange, what actually is occurring? We have talked about this ion exchange chromatography, this one. So in the ion exchange, here it is shown that like you can see this bead-like structure, and that is positively charged bead. This gray one, they are positively charged bead. The charge are shown there, and these are the bound negatively charged molecule. The red one, they are bound negatively charged. So and these are free positively charged molecules. So and the solvent movement is like in this direction from up to down. And the positively charged molecules will move freely and they will move uh, faster because the negatively charged will bind with these beads, and the positively charged molecules, if they are in the solvent, they will move out in the direction. So ion exchange chromatography is that. So that they uses charge. In here in this diagram, this is actually filtration chromatography. In gel filtration chromatography, it uses actually pores. They uses pores of certain beads or certain molecules. So these porous beads, so these are porous beads. So smaller molecules get trapped within these beads, in these pores actually, while larger molecules they move out. They don't trap in these pores. So this is actually uh, gel filtration chromatography, and they are actually using pores of these beads. Similarly, the third one is affinity chromatography. We didn't have talk about these regarding these two previously. So this affinity chromatography, they uses covalent bonds to create the differential affinities among the mixture of components of the stationary phase. So this is stationary phase. These beads, they are stationary phase. So bead with covalently attached substances. So they are covalently attached substances. So bound enzyme molecule. So this enzyme is bound with that other protein will pass through. So these enzyme will have affinity for these epitopes, and these so they will covalently bound use covalently bonds to create the differential affinities. So they will be having affinities for these beads. So they will bind here, and the rest of the molecules they will flow through, and this is known as affinity chromatography. And why this is affinity? Because within the solvent that we use to separate out, they will have affinity for
the for these beads, and they will bind here, and the rest of the molecules they will move out, and that's it. Who will explain? सर मैं कर दूं? Dua, please. सर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, उसमें क्या था कि अगर हम कोई मिक्सचर डालते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का, जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होती है, जिस तरह ये बीड्स हैं, अगर तो वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज वाले जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ बाइंड आउट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो पहले एल्यूट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज वाले जो हैं हमारे पास, कि वो यानी वो बीड्स के साथ बाइंड आउट रहेंगे, वो बाद में हमारा डिजायर प्रोडक्ट जो होगा वो एल्यूट होगा। ये हमारे पास आयन Exactly. एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद सिर्फ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में ये था कि हम लोग पोरस रेजिन बीड्स लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो तो इन पोरस बीड्स के अंदर इंटरकलेट कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर पहले अंदर रिटार्ड हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, वो पहले बाहर नहीं निकल सकते। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले एल्यूट आउट हो जाएंगे, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पोरस बीड से निकलने के बाद में एल्यूट आउट होंगे। एफिनिटी Great. क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये है कि हमारे पास बीड्स के साथ सर्टेन लिगेंड्स होते हैं। एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट के साथ या सर्टेन मॉलिक्यूल अपने लिगेंड के साथ बाइंड आउट करता है थ्रू कोवलेंट इंटरेक्शन, जो जिसकी अफिनिटी उसके सर्टेन सबस्ट्रेट के साथ होगी वो बाइंड आउट कर जाएगा, और जिसकी अफिनिटी नहीं होगी वो पहले एल्यूट आउट हो जाएगा। और लास्ट पे हमें इन तीनों केसेस में हमें जो लास्ट पे एल्यूट आउट होने वाली चीज होती है ना, वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। Great. So, excellent, excellent. So, इस केस में लाइक हम ये करेंगे कि बाकी चीजें एलूट आउट हो जाएंगी, ये जो यहाँ पे बाउंड रह जाएंगे इसको फिर हम बाद में एलूट करेंगे। सो हमारे पास वी विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लाइक वी विल प्यूरिफाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यस सर। and next to it is okay. So this is actually June 1941, and the birth of modern liquid and gas chromatography. So in June 1941, the British scientists, that's Martin and this Sine, presented a paper at a biochemical society meeting in London, and separation of monoamino and monocarboxylic acid in the wool using new liquid chromatography technique. That was at that time that was a new technique, and they called that partition chromatography. So they called that as partition chromatography, and the details are published in in this journal. For this work they received 1952 Nobel Prize. They got the Nobel Prize for that. Okay, after that, in their second paper, they stated what they stated: the mobile phase need not to be liquid. So it's not important that the mobile phase must be liquid, but maybe a vapor like a gas. And very refined separation of the volatile substance could therefore be possible in columns in which permanent gas is made to flow over gel impregnated with a non-volatile substance solvent. So the gas is actually the volatile, and it will impregnate with the non-volatile solvent there, and with that it can be sought out. But this was largely missed during the because at that time that was the time of World War II, and many labs missed this discovery. And when many libraries did not receive journals, and it was not until 1950s that Martin, along with young colleagues, successfully demonstrated liquid gas partition chromatography. So at the October meeting of Biochemical Society, and thus were born two of the most powerful analytical techniques in use today. For a fascinating historical account of these development, so you can go for the birth of partition chromatography. In 2001 they published that. So that is published actually. So this is how the history lies. And after that, if you can see the principle of chromatographic separation,
That is actually, this is the column, and this is the principle of chromatographic separation. A solute equilibrates between a mobile and a stationary phase, and the more it interacts with the stationary phase, so the more it interacts, the slower it move along the column. So the lesser it interacts with the column, the faster it will move. And while the mechanism of retention for various type of chromatography differs, so this depends on the type of chromatography, they are all based on establishment of the equilibrium between the stationary phase and the mobile phase. So the equilibrium between the two is important. So once the equilibrium is reached, so and this diagram, this illustrates the separation of these components on the chromatographic column. A small volume of sample is actually placed at the top of the column, which is filled with the chromatographic particles. So this column is actually filled with the chromatographic particles, and that is the chromatographic particles there, that is known as the stationary phase, and this one is the solvent now. So after that, you can see the equilibrium between the mobile and the stationary phase. So the distribution equilibrium is described by the distribution constant. So this is the distribution constant, and this distribution constant is the concentration of the stationary phase, and then the concentration of the mobile phase. So where S is the concentration of the component X on or in the stationary phase, and that will be in the stationary phase, and Xm is the concentration of the mobile phase at equilibrium. And this equilibrium constant is governed by the temperature, so the temperature will affect this. So it will be affected, this constant will be affected by the temperature, by the type of compound, so it will vary with the difference in compounds. It will vary with the type of stationary phase and the mobile phases. So all these, they will affect the this constant the equilibrium, and it is also called distribution coefficient or partition coefficient in partition chromatography. So distribution coefficient भी कहेंगे इसको, और partition coefficient भी कह सकते हैं. And solute with the large K, this equilibrium constant value will be retained more strongly by the stationary phase than those with small value. So जिसका Kc ज़्यादा हो, means the more the equilibrium constant, that will mean retention time जो है, retention ज़्यादा है, and that will move slow. The mobile phase will move slow, and the result is that the latter will move along the column more rapidly. So ये जो जिसका कांस्टेंट कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, that will mean the faster the mobile phase will move, the faster it will elute out. And because true equilibrium between two phases is not achieved, there will be some lag of analyte molecules between the two phases, and that's common thing, which depends on the flow rate of the mobile phase and on the degree of interaction with the stationary phase, and the result is band broadening, and this has been illustrated in the distribution of the two phases. The coming slide that explain this thing. यहाँ पे इसकी समझ आ गई है? प्लीज इसको समझ लें ताकि हम फिर आगे जा सकें. Who will explain this? Come on, who will explain? सर इसमें आपने ये बताया कि जी अनाया प्लीज. जी सर आपने इसमें ये बताया कि जो केसी है हमारे पास वो पार्टीशन वो
पार्टीशन कोफिशिएंट है, और जो कि ना इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द स्टेशनरी फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ द मोबाइल फेज के, और जो कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और ये डिपेंड किस चीज पे करती है, इसकी कि ये इक्विलिब्रियम में होगा उसके टेम्परेचर पे, या फिर टाइप ऑफ कंपाउंड जो यूज हुआ है, या फिर स्टेशनरी फेज की टाइप, या फिर मोबाइल फेज की टाइप पे डिपेंड करता है। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इसमें अगर हमारे पास केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जो हमारा जो मोबाइल फेज है उसकी मूवमेंट जो होगी वो स्लो होगी, और जो एल्यूशन होगी ना कंपाउंड की वो भी स्लो होगी। लेकिन अगर केसी की वैल्यू कम है, तो वो फिर जो है ना कंपाउंड जो भी हमारा कॉलम है मोबाइल फेज, वो ज्यादा रैपिडली जो है ना वो एल्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। So that means if the Kc value is more, the slower the movement will be, and if the Kc value is less, the faster the movement will be, and the illusion will be there. Am I clear? Yes, यस sir. सर। So that means So, indirect relation between the movement and the Kc value. Okay, अजीम समझ आ रही है? अजीम is there? अजीम, शफीक समझ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। Okay, अजीम ठीक है. And next to it is this thing. So this is a graph, and this graph shows this is in this graph, this this axis show the distance along the column. Indirectly, it will show the time, actually, the distance along the column, or the time it took through the column. And this is the concentration of the stationary phase. So the concentration of the stationary phase means it will be like we have a column, and in this column we will have the concentration of stationary phase. We will have like beads in this column, so the more the concentration, so if that has more concentration, and we need to pass out some, we need to pass out some solvent molecules, and that is like we have combination of solid molecules, and we need to pass them out through this. So we need to pass out through the column. So that will mean this, what this shows actually the concentration in the stationary phase. So if you can see, A and B, so these two are the mixture. This shows the mixture A and B. So A and B along the column, as they move down the column, if we measure the concentration of the eluted molecule as they emerge from the column and plot this as a function of time and the volume of the mobile phase. So the volume of the mobile phase, so they pass through the column, a chromatogram results. So as it passed through a column, so as it passed through a column, so and just it passed through the column, it will give rise to the results, and that result will be in the chromatogram structure. So it will show like we will get peaks file like this one. So these peaks will be visible, and we will get these peaks. And note that the substances move down the column, each band become more spread. So as the time pass, they become these two compounds, where if the time is less, so these two things, these two substances, they are merged together. But with time, as it moves through the column, with time they separate out. The distance between the two is increases, and they get like distinct bands when it comes out of the column.
So note as that as the substance moves down the column, each band becomes more spread out. So it's spread out more from one another. The area under each peak will remain constant. This is important. Area under each peak will be constant. So this is constant with this area. So like you can see this one. So if you can observe, this area and this area will be same, this area and this area will be same, so they will be same. The peak under each peak the area will be same. So in modern chromatography, a flow cell and a detector is placed at the end of the column to automatically measure the eluted compound and print out a chromatogram of the peaks for the separated substances. Although there are several forms of chromatography available, this is simplified model that typifies the mechanism of each. This is therefore there is a nominally and equilibrium between two phases, one mobile and the second one is stationary. And the true chromatography, we will be having this in mind, that true equilibrium is never really achieved. By continually adding mobile phase, we will be adding mobile phase. The analyte will distribute between the two phases and eventually be eluted out. And if the distribution is sufficiently different for the different substances, they will be separated. So that will depend on what? Depending on the and these two substances. If they distribute differently, they have different affinities, they will distribute differently. So the more the difference between the two, they will be more separate out from one another. And classification, so talking about some principles and theory, so we already have discussed about the classification. So there are certain types of classification of chromatographic techniques, and the first of the type is the adsorption, the second one is partition, third one is ion exchange, four penetration. So these are the different types. So various bases, and the bases are different, and they based on equilibrium. Um, so adsorption chromatography, they are the stationary phase is solid. In this case, in adsorption, the stationary phase is solid on which the sample component is adsorbed. So the sample components, they are adsorbed, and the mobile phase may be liquid. So that will mean liquid solid chromatography, because the mobile phase is liquid and the stationary phase is solid. So that will mean liquid solid chromatography, or a gas. So that will mean gas solid chromatography. So liquid solid chromatography can be adsorption, or gas solid can also be adsorption chromatography. The components distribute between the two phases through a combination of sorption and desorption processes. So we will so absorption mean adsorption and absorption. So the combination of the two is sorption. Sorption and desorption means elution, and then this is the combination of the two. So with these two combinations, the molecule, the mixture can be sorted out. Thin layer chromatography (TLC) is special example of adsorption chromatography in which the stationary phase is plane. So here the stationary phase is plane, like it will not be a column. So in the form of solid support on an inert plate, and the mobile phase is liquid. So in thin liquid chromatography, thin layer chromatography, so the mobile phase will be there, the liquid phase will be the mobile phase, and the stationary phase is actually a plane, and that will be and the support solid support will be there, and that will be an inert plate. So that's all about adsorption chromatography. For partition chromatography, the stationary phase of partition chromatography is liquid, supported on an inert solid. So the solid the stationary phase is what the stationary phase is liquid in this partition chromatography. And this what will be this support?
The support will be inert solid material that could be of anything. Again, the mobile phase may be liquid, so that will mean that will be liquid partition chromatography or gas. So a gas liquid chromatography, so GLC. So in normal mode of operation of liquid partition, a polar stationary phase, for example, methanol on silica. So silica will be used as inert material and methanol will be used as stationary phase, is used as non-polar mobile phase. So that will be non with a non-polar mobile phase. So this is polar, and a non-polar mobile phase will be used, and the non-polar will be hexane. So now you can see the polar stationary phase is used, and the non-polar hexane will not interact with the polar because polar will interact with polar. It will not interact with the non-polar. So we are using what we are using the polar stationary phase and the non-polar mobile phase. So what it will do, this favors retention of polar and polar compounds and illusion of non-polar compounds. So the polar compounds will retain there. So the if in a solution, if we have polar compounds, so the polar compounds will bind, will retain there with the polar phase. The stationary phase is polar actually, methanol, and the non-polar will elute out with the hexane because the mobile phase is non-polar, so it will elute out with the hexane. Am I clear? Yes, sir. Yes, And sir. Yes, sir. okay, and next is so and third of the type is ion exchange or size exclusion chromatography. In ion exchange chromatography, it uses an ion exchange resin as stationary phase. So the ion exchange resin will be having the charges, and the mechanism of separation is based on ion exchange equilibria. We will be talking about these all types in detail later on. This is actually just the introduction of these different types. Therefore, and in size exclusion chromatography, solvated molecules are actually separated according to their size by their ability to penetrate a sieves like structure, the stationary phase. So in size exclusion chromatography, the solvated molecules will be sorted out based on their size. So these arbitrary classification of chromatographic techniques and some types of chromatography are considered together as separate techniques. Some of the type are a combo or mixture of the two, such as gas chromatography for gas liquid. So gas chromatography can either be gas solid or gas liquid chromatography. In every case, successive equilibria are at work that determine to what extent the analyte stays behind and move along with the elute phase. In column chromatography, the column may be packed with small particles that act as the stationary phase. And that's it. So who will explain these types? सर मैं And करूँ? सर मैं कर दूं? अनाया दुआ दोनों आप कर चुके हैं. कोई और प्लीज. Who Fareen is there? Fareen? Yes, sir. Gee, what is actually absorption, partition, ion exchange? Yes, sir. इसमें ये था एब्जॉर्प्शन जो है सर इसमें हम एक मोबाइल या गैस हो सकता है दूसरा फेस है जो है वो सॉलिड और फिर हम इस तरीके से को सेपरेट लेकिन जो पार्टीशन उसमें करें फिर इस पर सेपरेट Your voice is distorted. Maybe there is some net problem. सर अब सही नहीं आ रही सर अब ठीक है जी.
सर मैंने पार्टीशन का ये बताया कि इसमें हम जो दोनों फेसेस यूज कर रहे हैं वो लिक्विड हों और हम पोलर और नॉन पोलर की बेस पे उनको सेपरेट आउट। जी exactly, yes, that's true. And next to it is सर ion ये exchange. आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूजन है, ये सर अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि इसमें हम आयन्स की बेस पर और साइज की उसके मॉलिक्यूलर साइज की बेस पर उसको सेपरेट। ठीक हो गया, that's great. Okay, who will explain next? सर मैं कर दूं? अनाया आप कर चुकी हैं. Like I want someone other like who didn't participate it. सिबका शाहिद. जी जनाब, सिबका बताएं. सुहेब is there. सुहेब. यस सर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है. सुहेब ये बताएं, ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है ये क्या है? सर ये स्टेशनरी फेस में जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है सर, लिक्विड को स्पोर्टेड किया जाता है सर। लिक्विड को सर हम कन्वर्ट करते हैं टू सॉलिड में सर। सर और अगेन लिक्विड. इसको सर जी लिक्विड को एज अ स्टेशनरी फेज हम लेते हैं. कोई सॉलिड इसको सपोर्ट, उसके लिए हमें कोई सॉलिड सपोर्ट चाहिए. लाइक इसमें जैसे ये होगा. जी इसमें ये होगा, जस्ट मैं क्लास के लिए भी बता दूं कि इसमें ये होगा कि तमाम क्रोमेटोग्राफी में हमें कोई सॉलिड सपोर्ट चाहिए होगा. ठीक है. इस सॉलिड सपोर्ट को हम स्टेशनरी फेज नहीं कहेंगे, बल्कि इसमें अगर हम सॉलिड यूज कर रहे हैं, लाइक अगर ये कॉलम है तो इस कॉलम में अगर हम सॉलिड यूज कर रहे हैं तो फिर हम उसको हम सॉलिड, हम वो स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड है. लेकिन अगर हम इसमें कोई लिक्विड यूज कर रहे हैं सो दैट विल बी द स्टेशनरी फेज विल बी लिक्विड. ठीक है. सो ये डिपेंड करता है कि इस यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं. सो स्टेशनरी फेज, लेकिन ये इसके लिए हमें कोई सपोर्ट चाहिए एंड दैट सपोर्ट इज सॉलिड. उस सपोर्ट को हम स्टेशनरी फेज नहीं कहेंगे, बल्कि इसमें जो हम जी एग्जैक्टली जिसमें हम जो सब्सटेंस यूज करेंगे उसको हम फिर स्टेशनरी फेज कहेंगे. और वो स्टेशनरी फेज, either that stationary phase can be liquid or और सर that stationary phase could be solid. एंड मोबाइल फेज जो है वो जो हम यूज कर रहे हैं मोबाइल फेज, सो दैट मोबाइल फेज वो आइदर दैट कुड बी लिक्विड और दैट कुड बी गैस. सो हम ये इल्यूट करेंगे, इसे पास करेंगे इस उससे स्टेशनरी फेज से. सो ये इसका प्रिंसिपल है पूरा. एम आई क्लियर? यस सर। ओके, यस दैट्स सर। गुड. यस सर। दैट्स गुड. ओके सुहेब, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लेन फॉर द क्लास एक्चुअली. नो सर, Is a frequently used technique for purification. Is just like simple chromatography, but it has it's used for separation of biomolecules. So generally हम deal भी biomolecules को कर रहे होते हैं, like proteins, like amino acids, nucleic acids, and this sort of thing. So we deal with biomolecule. So ion exchange chromatography is more relevant to us. And this technique separates the molecules according to their net charge on the proteins and nucleic acid. So in molecules के ऊपर जो net charge है उस charge के according इसको like separate किया जाएगा different molecules को. Like we have a mixture of different proteins. हमने बैक्टीरियल सेल के लाइसेट लिया हुआ है, मीन्स के उसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको हमने सेपरेट करना है, मीन्स के लाइक डिफरेंशिएट करना है बिटवीन डिफरेंट प्रोटीन्स. सो गो फॉर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. And same is with the case with the other like a mixture of proteins or nucleic acid or somewhat like whatever it is. So we can separate them through
ion exchange chromatography, and that will this procedure will depend on the net charge on these molecules, these macromolecules actually. And if you can see, there are different types of this IEC, and there is this is the laboratory technique. You can see this type of apparatus in the laboratories. So this is the resin-based column, and you can see this is the most common in laboratories. Certain commercial kits are available, and these are based on ion exchange chromatography. So certain kits are available on commercial basis. One can purchase them and use them. Okay. Certain automated tools are there. Certain automated equipment is there to perform ion exchange chromatography, and this is the same setting for one of the technique in IEC. So next is the principle of ion exchange chromatography, the forces of attraction between the stationary phase and the mobile phase. So this deals with the forces of attraction between the stationary phase, this phase, and the mobile phase. So the forces of attraction between the two will be dealt in ion exchange chromatography. And in ion exchange chromatography, ion exchangers are used, and these ion exchangers, they consist of two parts. The first part is the inert support medium, means कोई paper है या inert support medium है, और that will covalently bind to positive or negative functional group contained by resin. So resin के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होंगे, और वो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो इस स्टेशनरी फेज में होंगे, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो हैं वो इनर्ट सपोर्ट के साथ किस तरह बाउंड होंगे, वो कोवेलेंटली बाउंड होंगे विद द इनर्ट सपोर्ट. जो इनर्ट सपोर्ट है उसके साथ वो मॉलिक्यूल जो स्टेशनरी फेज है वो कोवेलेंटली बाउंड होगा, और उसके ऊपर उन सब्सटेंसेस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स होंगे. इन फंक्शनल ग्रुप्स को फिर यूज किया जाता है फर्दर. इनके बेस पे एक्चुअली सेपरेशन होती है of different proteins or different macromolecules, for instance. And oppositely charged ions are attached to these functional groups. अब इन functional groups से जो resins है, अगर इनके ऊपर functional groups हैं, इन functional groups के ऊपर जो है oppositely charged ions को attach करवाया जाता है onto these functional groups, which are picked to be replaced by counter ions in the sample. So in samples में जो ions होंगे means positively charged ions यहाँ पे attach हैं, फंक्शन ग्रुप्स के साथ अटैच है. फंक्शन ग्रुप जो है वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके साथ ऑलरेडी फंक्शन पॉजिटिवली चार्ज अटैच होंगे. सो यहाँ पे जो सैंपल हमने ऐड किया हुआ है उस पे जो पॉजिटिवली चार्ज उसमें जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देंगे. सो इनको हम जो सैंपल में जो चार्जेस हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको काउंटर आयंस कहेंगे. इन काउंटर आयंस ने जो फंक्शन ग्रुप के साथ जो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं उनको रिप्लेस करना है. ठीक है. सो दे विल बी द अपोजिट चार्जेस, दे विल रिप्लेस एक्चुअली the ions that are attached to those functional groups on the stationary phase. Okay, so diagrammatically, if you can see the basic components of an ion exchanger. So these are the basic two components of the ion exchanger. First is ion exchange resins. So एक तो resin होगा, ठीक है, और जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप होंगे. और सेकंड क्या होगा, एक्सचेंज मीडियम होगा जो लाइक केटाइन एक्सचेंजर और एनाइन एक्सचेंजर. सो केटाइन या एनाइन एक्सचेंजर होंगे वो उन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर अटैच होंगे, और फिर जब हम सैंपल ऐड करेंगे तो उन्होंने क्या करना है, लाइक केटाइन एक्सचेंजर को या एनाइन एक्सचेंजर को रिप्लेस कर देना है. एम आई क्लियर अप टिल नाउ? यस सर. ठीक है. कौन Yes, एक्सप्लेन sir. करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं मैं करूँ? रबिया प्लीज आप कर दें. सर यहाँ तक अभी तक आपने ये बताया है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी एक प्योरिफिकेशन की टेक्निक है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट चार्ज. और इसमें जो है वो 3 टाइप्स की आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आ जाती है. लेबॉर्ट्री बेस्ड होती है, कमर्शियल बेस्ड होती है, और ऑटोमेटिक टेक्निक्स भी होती है.
और इसका प्रिंसिपल ये है कि इसमें हम स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो किस तरह देखते हैं कि जो हमारे पास जो सैंपल होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नीचे जो हमारे पास कॉलम के अंदर जो चीज़ होती है उसके अंदर रेजिन्स प्रोड्यूस होते हैं, रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज, और इनके साथ कोई कैटाइनिक या एनाइनिक एक्सचेंजर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। अगर हमारे सैंपल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग ऐसा जो मीडियम यूज़ करेंगे कॉलम के अंदर जिसमें पॉजिटिवली चार्ज यानी कैटाइनिक एक्सचेंजर्स होंगे, वो आके इन फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो मॉलिक्यूल्स अटैच है उनको रिप्लेस कर देंगे और खुद आके बाइंड हो जाएंगे यहाँ पर। तो इससे जो है वो बायो मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे इस बेसिस पे। Exactly. Okay, and okay, so two types we okay, so these resins, the ion exchanger, the exchange resins, they actually are composed of two types of material. One of the two types of material, either they could be polystyrene or they will be made up of cellulose. So polystyrene या cellulose हम use कर सकते हैं in these as on these resins, and they will be ion exchange resins actually. So so they differ from each other like in certain properties. First of the property will be flow property. So flow properties इनके different होंगे, like हम sample को flow through करवाते हैं उससे, so इनके जो polystyrene है means कि ये तो stationary phase में होंगे, तो इनके flow properties different होंगे. Polystyrene will behave differently from the cellulose. So that depends, either we need to use polystyrene or cellulose. We're going to discuss this later in these slides actually. And the second one is accessibility to ions, means how ions are accessible in polystyrene or in cellulose, and chemical or mechanical stability, like they differ in chemical and mechanical stability, that differ in these properties, they differ in accessibility to ions, they differ in their flow properties. So this is what we have talked about this ion exchange resin. And if we could see these polystyrene, so polystyrene is polymerization of styrene, this one. So this is actually the polymerization of styrene with the divinyl benzene cross linkages. So this divinyl benzene, this actually cross link the two surfaces actually. So like these will be like the two strands. So they will cross link these strands. And so the polystyrene is basically composed of styrene monomers with a cross linked with divinyl benzene, and useful for separation of compounds with low molecular weight. So if we need to separate compounds containing low molecular weight molecules, so if our sample contains low molecular weight proteins, low molecular weight substances, go for using polystyrene. And inadequate for separating macromolecules. If you are dealing with proteins, if you are dealing with nucleic acid, don't use polystyrene, because polystyrene is meant for low molecular weight molecules. And what about cellulose? So cellulose is they contain they are high molecular weight compounds. So they in itself in itself they are high molecular weight compound and available in high quality pure state. So they are available in the pure state as well, and they are best for separation of macromolecules. So for macromolecules, opt cellulose. And next is like we are done with the ion exchange resins, these exchangers.
And what about the exchange medium? So in the exchange medium, the this will be actually the stationary phase, and this is the anion exchanger, and anion is actually the negative charges. So this will exchange the negative charges, so the negatively charged they will be bind with there, so that is stationary phase particle. This is also a stationary phase particle, so it will contain positive charge, but it will exchange negatively charged molecules. So the negatively charged, so anions will bind there. So this will be called as anion exchangers, and these will be called as cation exchanges because the cation will be exchanged. We will be talking about this later on in these slides. So the positively charged analyte, they are cations, and these negatively charged analyte, they are anions. So they are attracted to the positive surface, and the positive will be attracted to the negative surfaces. So if our sample is positive, so use cation exchanger. If our sample is contain anions, use anion exchangers. And okay, यहाँ तक clear है? Yes, sir. Okay, दुआ सर जी. सर ये जो इनको हम किस बेस पे करते हैं? समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है ना कि केटाइन एक्सचेंजर्स इतने स्ट्रांगली बाइंड आउट कर जाएं कि हमारा जो ओरिजिनल सैंपल है वो सेपरेट आउट ही ना हो. अच्छा, ये वीकली बाउंड होते हैं, इसमें स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते. ये आगे जाके ये डिस्कशन होने वाली है आगे. ओके सर. ठीक है, ये रिप्लेस हो सकते हैं, लाइक उससे ज्यादा चार्जेस वाले के साथ ये रिप्लेस होंगे फिर. ठीक है. ओके सर. ओके, एंड नेक्स्ट इज सर ये जो हम जी जी. पॉलीस्ट्रीन और सेलुलोज यूज करते हैं, इसके सर अलावा कोई यूज कर सकते हैं रीजन? रेसिन कॉमनली इन्हीं दो में आ रहे हैं वैसे. आप देखें फिर मुझे भी बताएं, मैं भी देख लेता हूँ. ठीक है, लेकिन दे आर ओके मोस्ट कॉमन, दे आर मोस्ट कॉमन, और हर जगह पे यही दो यूज होते हैं. ठीक ओके है, सर. नेक्स्ट क्लास में आपने भी देखना है, मैं भी देख लूंगा, एंड वी विल डिस्कस दैम. ठीक है. एंड यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है, the same procedure, the same display of these anion exchanger and cation exchanger. This is represented in another way in this type. So the black color, this circle shows the resin. With this resin, the exchangers are covalently bound. We have talked about this earlier, that they will be covalently bound with the, where is that, they will be covalently bound with inert support. So the, here is, if you can see, so these are the negatively charged exchangers. They will be the cation exchangers. Okay, so there will be cation exchangers, the negatively charged exchangers. So these are cation exchanger because this will exchange cations, the positive charges. So and these are these are sample ions, the X, the positively charged. They are sample ions, and they are counter ions. So these counter ions, they will replace the counter ions, they will be replaced by the sample ions. तो सैंपल में हमारे पास जो आयंस होंगे, इन्होंने इन काउंटर आयंस को रिप्लेस कर देना है. So exchange between Y positive and X positive charges, so it's can be represented like this. इसकी समझ आ गई है? Yes, sir. यस सर सर. ये जो काउंटर और सैंपल लाइंस है, इनका पर्पस बस एक्सचेंज होता है? जी जी, ये एक्सचेंज होते हैं. ये आपस Sir? में असल में इस एक्सचेंज को हमने डिटरमिन करना है, इसको कैलकुलेट करना है, और इससे हमने पता चलाना है कि कौन से प्रोटीन्स जो हैं वो कितने हैं, और उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, और उसको हम लाइक प्यूरिफाई भी कर सकते हैं. जी Sir? जी जी.
इसमें हम सैंपल में NaCl भी तो यूज करते हैं, जो जाके सैंपल आइंस के साथ जो क्लोरीन होता है वो बाइंड कर जाता है ऑपोजिट एग्जैक्टली। चार्जेस की वजह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो इस यहाँ तरह पे देखें, दैट विल बी काउंटर आयंस। यस सर। जी जी, they will be replaced with the sample ions। यस सर। जी जी। सर जी कौन, जी जी। सर जब हम यानी जब इसकी एल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले फिर काउंटर आइंस बाहर एल्यूट आउट होंगे। ये आगे आ रहा है, वैसे ये आगे आ रहा है, ये डिपेंड करता है व्हाट वी नीड एक्चुअली। एग्जैक्टली, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो सबसे पहले जो ये है ना, जो काउंटर आयंस ये इल्यूट होंगे, ये यस इल्यूट सर। होके फिर वॉशिंग स्टेप्स हैं, और फिर हमने अपना सैंपल जो है वो इल्यूट, अपने प्रोटीन्स जो सेपरेट आउट हुए हैं वो इल्यूट करने हैं। एग्जैक्टली इसी तरह है। ओके। So next is elution can be done in two ways, by elution buffer of high magnitude of charges. So high magnitude of charge को हम लेकर, मीन्स के पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, हमने ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस को यूज़ करना जिसमें चार्जेस ज़्यादा हों, ठीक है, उससे हम इसको इल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ द इल्यूशन बफर, इल्यूशन बफर के पीएच को अगर चेंज करेंगे तो उससे भी चार्ज में डिफरेंसेस आएंगे, तो उससे भी हम इसको इल्यूट कर सकते हैं। So these two ways can be used to elute out the charge molecules. And next is, if you can see this thing, यहाँ पे देखें, this is the resin, और इसके साथ जो है ये चार्जेस अटैच हैं, एनाइले वो हैं लाइक फंक्शनल ग्रुप्स। एक्सचेंजर्स, हाँ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एंड दीज आर द एक्चुअली द एक्सचेंजर्स। And if you can see this, this will behave like this. So this is the first step of equilibration. Now at this stage we didn't use any sample, हमने sample use नहीं किया हुआ फिलहाल, ठीक है। So जो negatively charged हैं they will bind there, ठीक है। So this will be anion exchangers, and if you can see this in the second step of the equilibration. Now this is the sample application and wash. So now the sample is applied. So the sample will contain the functional group, and that will replace the other charges. Is it clear? यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay. And in the third step, elution. So how we will elute these our proteins. So now we will be using next charges to elute out the proteins, and this is how it will be eluted. Like, check it again. So दो जिस पे फंक्शनल ग्रुप्स कम हैं वो जल्दी इल्यूट हो जाएंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स ज़्यादा हैं, मीन्स चार्जेस ज़्यादा हैं, वो बाद में इल्यूट होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रीजनरेशन, to again regenerate the system, and this is what is the start, like जहाँ से start किया था, so to regenerate the whole system again। इसकी समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, कौन एक्सप्लेन कर देगा इसको थोड़ा सा? सर मैं करूँ? अनाया जी प्लीज आप कर दें। सर आपने पहले बताया था कि हम दो टाइप के रेजिन्स यूज करते हैं, एक पोलिस्टीरीन होता है और दूसरे वाला सेलुलोज होता है। पोलिस्टीरीन जो होता है वो हम स्मॉलर लो मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए वो यूज नहीं कर सकते। और सेलुलोज जो होता है वो हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये डिपेंड करता है कि हम सैंपल्स किस तरह का यूज करें। इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लो और एक्सेसिबिलिटी ऑफ आइंस और स्टेबिलिटी। ये सैंपल पे डिपेंड करता है कि हमने क्या कौन से वाला रेजिन यूज करना है। और उसके बाद आपने बताया था एनायनिक एक्सचेंजर एंड कैटायनिक एक्सचेंजर। एनायनिक एक्सचेंजर में स्टेशनरी फेज के साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और हमारा जो सैंपल होता है उसमें नेगेटिवली चार्ज जो एनालिट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
और उसके अगर हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके साथ जो सैंपल आयंस होंगे वो नेगेटिवली चार्ज उसके साथ अटैच्ड होंगे। लेकिन जब हम अपने सैंपल को हम पास आउट कराएंगे कॉलम में से, तो जो सैंपल में नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिप्लेस कर देंगे जो सैंपल आयंस थे उनको, और जाके वो स्टेशनरी फेज के साथ अटैच हो जाएंगे। इस तरह सबसे पहले जो है वो जो सैंपल आयंस थे वो एल्यूटेटिव हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमारे जो हमारे सैंपल में नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो जो स्टेशनरी फेज के साथ अटैच्ड हैं वो इस बेसिस पे एल्यूटेट होंगे। सबसे पहले जो जिनके पास सबसे कम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, सबसे पहले वो एल्यूटेट होंगे, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग जिनके साथ ज्यादा चार्जेस हैं नेगेटिवली चार्ज। ठीक हो गया। तो क्लास समझ आ गई है? यस Yes. Okay, and Umema, is it clear? Umema is here, Umema? उमेमा, उमेमा आपको आवाज आ रही है? सिबका शाहिद, सिबका? Okay, you have mic problem. Sibka, can you hear me? Sibka Shahid. Okay, so Sibka is not there. Ikra Sharif, Ikra? इकरा शरीफ, आपको आवाज आ रही है? एंड मारिया अमीन, मारिया अमीन, यस सर। आपको समझ आ रही है मारिया? यस सर। ठीक हो गया। And okay, so next is the procedure. Like there will be weak exchanger. So, and this is actually the strong exchanger. So ion exchangers with ionic groups that are totally ionized at all working working pH values. So there will be strong exchangers, and the ion exchanger with functional ion groups that are ionized only at a narrow range of pH values. So there could be sulfonates, quaternary ammonium. So they are strong exchangers. And for weak exchangers, they are carboxylate, diethyl ammonium. They are weak exchangers. ठीक है? So these Excuse are me the sir. type. जी जी. सर ये राइट साइड वाले वीक एक्सचेंजर्स हैं, दोनों पे वीक लिखा हुआ है इसलिए। हाँ हाँ, ये ऊपर ये गलती से लिखा हुआ है. These are the strong exchangers and they are weak exchangers. ठीक है? So and because they will ionize at all working pH values. ये तमाम pH values पे काम करेगा, exchange करेगा ions को. ठीक है? So they will be strong. And ये जो है ये एक narrow range of pH values में ये ion exchanger होंगे, otherwise they will not be exchangers. So they will be strong exchangers. They will be weak exchangers. And after that, the effect of pH on protein purification. So this already we have discussed this thing previously, but now if you can see in the context of protein purification,
We will study this in the context of protein purification in itself. Like we have talked about this, like at low pH, what will be the status of charges? At low pH, below the pi value. So below the pi value, when pH is less than the pi is the stage where there is no net charge. मीन्स के नेट चार्ज जो है वो नहीं होगा. मीन्स के अगर 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 5 नेगेटिव चार्जेस भी होंगे. सो दैट इज द पी आई. So at this stage where negative and positive charges are equal, that will be the stage where pH is equal to Pi. ठीक है said. So that is the isoelectric point. So if pH is less than Pi, अगर ये इस वैल्यू से कम है, so there will be the protein will have net positive charges. So net positive charge होंगे अगर Pi जो है वो pH से कम है. So positive charge. So ये Pi से जितना दूर होगा उतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे. यहाँ जितना करीब करीब आता जा रहा है, so positively charges are reduced, like they equilibrate the negative charges. अब यहाँ पे देखें इस स्टेज में at stage 1, this is far below the Pi. So यहाँ पे सारे positive charges हैं. When we proceed towards the Pi, so negatively charged ions are also increasing. At this Pi, the negative and positive equilibrates. They are equal. After, when pH is greater than the Pi, अगर pH Pi से ज़्यादा है, what will happen? The negative charges will increase. The more the distance between the Pi and the pH, so more will be the negative charges. Am I clear? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So जी जी बताएं. Okay, so for protein stability, now we need to choose ion exchanger. Which ion exchanger we need to choose? Like here, either we need to choose this one or this one. Which ion exchanger we need to choose? We have to keep this in mind. And now the selection of ion exchanger will be depending upon the protein stability. If the protein is stable below its pi, so pi से below जो है अगर ये stable है, so go for cation exchangers. So like that will mean if it is below the pi, that will mean the protein will be having net positive charges. So positive charges means we need to use cation exchangers because it will exchange cations, the positive ions. But if the protein is stable above its pi, so our protein is negatively charged, so we need to use anion exchanger because it will exchange for the negative charges, the anions. And also the molecular weight of the proteins. For less than 10,000 kilodalton, matrix with small pore size will be used. This will not be kilodalton. I will confirm this. This may be dalton actually. So if that is the size is 10,000 to 100,000, so use Cephalose column. So Cephalose column use कर लें instead of the other matrix that are to be used for the separation. So also the molecular weight we need to consider protein stability. So these two things we need to consider before choosing before selecting ion exchangers. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, जी जी.
अगर प्रोटीन के जो नेट चार्ज है वो 0 हो या फिर उस बिल्कुल थोड़ा सा वो पॉजिटिव हो या फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो, तो फिर हम कैसे चूज करेंगे? अगर लाइक दैट वेल नेट भी हमने जिस प्रोटीन को यूज करना है वो वो डिपेंड करेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो ये देखना है कि स्टेबल कहाँ पे है। अगर वो उससे कम है या पॉजिटिव चार्ज होगा या सर नेगेटिव चार्ज होगा, कम या इसमें ज्यादा। हम जी जी इसमें तो हम अटेन यही कर रहे हैं कि हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाए, इसीलिए तो हम कैट आयनिक और एक्साइनिक एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर वो पहले 0 होगा तो फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है एक्सचेंजर यूज करने की। बिल्कुल, वो तो डायरेक्ट इल्यूट हो जाएगा ना। ओके सर। And next to it is, so few factors that affect ion exchange. The cross-linking, three factors are there in the three different steps we need to consider. At the first step, ion exchange resins, and the cross-linking is important for the effective separation. For effective separation, the cross-linking is important. So cross-linking इसमें important है. In the sample, the concentration of charge, concentration and charge of ion is important. Means which charge and how much is the concentration of those ions. That is important in the sample. For sample, this is important. For ion exchange resins, cross-linking is important. And for buffer, the pH of the buffer should impart the same charge. Means buffer इस तरह ना हो कि वो charge को ही वो कर दें. So that should impart the same charge to the sample ions as present in the column. So column में जो अगर for instance positive charge है तो वो buffer जो है वो sample में इस तरह हो कि वो same charge ही हो, वो उसको change ना करे. Means same charge को वो उसने replace करना है, तो वो उसको affect ना करें. So these three factors actually they affect the overall experiment, the overall technique actually. Am I clear? यस यस सर। सर। यस अच्छा, सर। कौन एक्सप्लेन करेगा अभी तक जो हुआ है? मैं कर दूं? दुआ आपने भी किया हुआ है और फरीन इज देयर, फरीन या अजीम आप कर लो, अजीम। ओके सर। चलें। सर कहाँ से स्टार्ट करूं? डिपेंड करता है आप पे, लाइक फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट, लाइक जहाँ से आप स्टोरी ओके बना सर। सकें। Okay, इसमें I'm going to start from the exchanger. There is some are strong exchangers and some are weak exchangers. So it depends on the protein structure and strength. We are actually standardizing our protein according to the isoelectric points. If the protein has an pH level below the isoelectric point, then we use the cationic exchanger, because we need to remove the positive ions. We need to exchange the positive ions to get the protein to the isoelectric point. If our protein has a higher pH level, then we use the anionic exchanger to exchange the negative ions from the protein. And on the other hand, other than exchanger, protein size and molecule size is also depend. If the protein size is 10,000 Dalton, then we used the matrix with small pore size for this purpose. And if the protein size is 10,000 to 100,000, then we use the Safarow's column. Okay, and afterward, there are certain properties of the factors. There are certain factors which affects the ion exchange, just like the cross-linking is important for the effective separation, and concentration is also a demand. If the concentration is also important, because the higher the concentration, the lower the movement. The lower the concentration, higher the movement. And other than buffer is also necessary, because buffer is necessary to maintain the pH value. If the buffer is not suitable to get maintain the protein for the isoelectric point, then it would be difficult for our exchanger to convert the ion exchange the protein from the lower to higher to isoelectric point. Great. So and next is great. Thank you. Okay, and next is advantages of this
ion exchange chromatography. So there could be the ion exchange chromatography, why people use them, the technology, because they can be reused, because this is like the whole system could be regenerated. So they can be reusable, easily collectible, cost effective and quick separation, efficient technique. This is an efficient technique and low maintenance cost. So cost effective and low maintenance cost, like maintenance cost भी कम है, and applications को अगर हम देख लें, so there are certain applications. The first one is if we need to soften the hard water. So hard water को अगर हमने soften करना है, go for isoelectric, go for ion exchange chromatography. Deionization of water. So this is being used in deionization of water to concentrate the metal ions in the sample. So this can be used to separate protein mixture, to separate protein mixture. So protein mixture के अगर हमने different components को separate करना है, so we can use them. To separate nucleic acid, different molecular weight nucleic acid, we can do that. The charges, but this will, as its name indicates, this will depend on the size. And size exclusion chromatography, also this is known as non-absorption technique for purifying protein. So this is non-absorption technique for purifying protein, and because this we will exclude the size. Let's check how it works. So it uses porous particles to separate molecules of different sizes. So the porous molecules will be used, and they will actually differentiate between different proteins based on their sizes. And it is generally used to separate biological molecules and to determine molecular weight and molecular weight distributions of polymers. So we can distribute, and we can differentiate between the polymers, between the biological molecules, etc. And it's usually applied to large molecules and macromolecular complexes such as proteins and industrial polymers like synthetic polymers, for instance. And the separation of molecules is called fractionation. So it is also known as fractionation, because we gonna go for separating molecules and distinguishing between molecules, among molecules. And size of pores in beads. So beads are normally used. यस सर आ यस रही सर, है आ रही है। Okay. Okay. यस सर So one of the type of size exclusion chromatography is gel permeation chromatography. And gel permeation chromatography, that is when an organic solvent is used as a mobile phase. So in the mobile phase, when we use organic solvent, and this technique will be known as gel permeation chromatography. And the okay, we will talk about the other type of chromatography further in the coming slides. Okay, and this gel permeation chromatography actually uses a hydrophobic column packing material, because this will be the column packing will be the hydrophobic and a non-aqueous mobile phase. We already talked about that, that the solvent phase will be organic. That will mean that will be non-aqueous mobile phase. So non-aqueous mobile phase are organic solvent to measure the molecular weight distribution of synthetic polymers. So this technique in which we use organic solvent instead of aqueous solvent, that will be called as gel permeation chromatography, and this is one of the type of size exclusion chromatography. And the other type will be gel filtration chromatography. And gel filtration, when we use aqueous solution as a solvent and is used to transport the sample through the column, the technique is known as gel filtration chromatography. And this uses hydrophilic packing, because that will be using hydrophobic packing, and this will be using hydrophilic packing. The column and the aqueous mobile phase will be used to separate, fractionate, or measure molecular weight distribution of molecules soluble in water, such as polysaccharides, etc. So
So these two types are the major types of size exclusion chromatography. Now, who will explain? Who will explain? Any volunteer? सर मैं कर G, दूं? G Anaya, please. सर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स आपने बताई हैं, जेल परमिएशन और जेल फिल्ट्रेशन। जेल फिल्ट्रेशन में हम जो कॉलम यूज करते हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जबकि जेल जेल फिल्ट्रेशन में हाइड्रोफिलिक कॉलम यूज होता है, और जेल परमिएशन में हाइड्रोफोबिक। जेल फिल्ट्रेशन में जो मोबाइल फेज होता है वो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल का होता है, और ये दोनों जो साइज एक्सक्लूजन बेसिकली हम यूज करते हैं पोरस मटेरियल यूज करते हैं उसमें, और हम मॉलिक्यूल्स का या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट और साइज हम उनको सेपरेट आउट करते हैं या फ्रैक्शनेशन करते हैं। ठीक हो गया. So basically we have two types. The first one is gel permeation, where we use organic solvent, and the other gel filtration, where we use aqueous solution or aqueous solvent. Next to it is the principle, like what is the principle of this chromatography, size exclusion chromatography. So basically, a mixture of molecules dissolved in liquid, that is the mobile phase. So this will be our sample, because like if we have a sample of like you name some molecule, like we have a mixture of proteins, like we have insulin, and that is we will dissolve that in some liquid, and the liquid will be that will make that sample plus the liquid, the solvent, the mobile phase. So these two will become the mobile phase now. So it's applied to the chromatography column, which contains solid support in the form of macroscopic spheres or beads. So the column will contain the stationary phase, and that stationary phase will either be beads or microscopic spheres, and they will be in the column and bounded with some solid support. These beads will be bound with some solid support, and the mass of the beads within the column is often referred to as column bed. So all the beads collectively, they can also be called as column bed. And the beads act as traps or sieves and function to filter small molecules which become temporarily trapped within these pores. So these beads will trap the sample molecules. So the smaller sample molecules will be trapped in, and the larger molecules will go besides the beads. They will not trap in the beads, and that will be they will be elute out, and then we will elute the, the trapped molecules then. And larger molecules pass around or excluded from the beads. So larger molecules will be excluded. So they will not be trapped in those beads. And large sample molecules cannot or can only partially penetrate the pores, whereas smaller molecules can access most or all pores. So and the large molecules elute first. So this is actually the basics. So the the first to elute will be the large molecules, and the later ones will be the smaller molecules. So if we have a mixture of samples, so the larger molecules will come out first, that will elute out first, and after that, those will be followed by the smaller molecules. So while molecules that can access all the pores elute from last from the column, and particles of different sizes will elute through stationary phase at different rates. So this will also depend the movement within the stationary phase will also be different for different size proteins. And if you can see this one, this is a size exclusion chromatography. This is the bed, the beads within the column, and this is a sample. After the sample, the solvent is loaded, and this goes through the column, the stationary phase, and they are elute out at different time periods.
So and then we can see this graph, like very small molecules enter many pores. So these small molecules will enter the pores, equilibrating between the gel and the moving buffer, so travel slowly and are eluted later. But in this medium, the medium-sized molecules enter some pores, so they will enter some of the pores, and in the gel, equilibrating between the gel and the moving buffer. So many molecules, the smaller molecules, they will trap in larger, the medium-sized molecules. Some of the medium will trap in, other will move, and the large molecules, they enter few pores in the gel, and so travel rapidly and are eluted sooner. So if you can see, these larger will elute sooner, followed by the medium one, and they are then followed by the smaller ones. Am I clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, who will explain? सर मैं Sir, कर दूं? मैं कर दूं? Rabia. Anaya, आप Yes, sir. कर okay. Rabia, please tell me. सर प्रिंसिपल में ये बताया है कि जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल ये है कि हम अपने जो सैंपल होता है जिसमें डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पहले अपने मोबाइल फेस में डिजोल्व करते हैं जो लिक्विड होता है, और फिर इसको अपने क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में अप्लाई करते हैं जिसके अंदर सॉलिड सपोर्ट के तौर पे जो बीड्स होती हैं या माइक्रोस्कोपिक स्फीयर्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो पोर्स होते हैं। जब हमारा सैंपल इनमें से पास करता है तो जो डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन बीड्स के जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रैप कर जाते हैं टेम्परेरी, और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से एक्सक्लूड आउट हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल डिफरेंट रेंजेस में एक्सक्लूड आउट होते हैं। सबसे जो है पहले लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो पोर्स के अंदर ट्रैप नहीं होते तो वो एल्यूट होते हैं, और फिर मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाफ पोर्स में ट्रैप हुए होते हैं तो उसके बाद वो एल्यूट आउट होते हैं, और लास्ट में जो है हमारे पास स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स वो भी हमारे पास एल्यूट आउट होते हैं। ठीक हो गया, ठीक है. So and next to it is the components. What are the components? Actually, there are basically 5 components of this size exclusion chromatography. And the first of the component is stationary phase, the mobile phase, the columns, the pump, and the detectors. So these are the different considerations we have to take into for conducting size exclusion chromatography. Uh, the stationary phase actually consists of semi-permeable porous beads with well-defined range of pore size. So the stationary phase will be semi-permeable, and that will contain porous beads. We already have discussed this thing. And the beads are cross-linked polymers. So what these beads made up of, they are made up of cross-linked polymers. So they are actually polymers, and they are polymerized organic matter. So they are polymers, and they are actually cross-linked. So the beads are cross-linked polymers, and the degree of the cross-linking is controlled carefully to yield different pore size. So on what thing actually the pore size will be dependent upon, so that will depend upon the degree of the cross-linking. More the cross-linking, smaller will be the pore size. And smaller pore size are used for rapid desalting of proteins and for protein purification. So for protein purification, usually small pore size are used, and intermediate pore size are used to separate relatively small proteins. So if they are relatively small proteins, means they are the proteins larger from these proteins, so we need to use intermediate pore size of these beads. And after that, very large pore sizes are used for purification of biological complexes. Now this is not a single protein, there will be a complex. Like we need to know that, like in a sample of in a biological sample, maybe there are few proteins, they are interacting proteins, they interact with one another, making a complex. Like a polymerase is a complex of different proteins. So same is with like other, like ribosomes, or like with the other proteins complexes.
So for those, we need to use larger pore sizes. And stationary phase used for gel exclusion chromatography include dextran. So dextran, also known as Cefadex. So for stationary phase of gel exclusion chromatography, dextran can be used, like it is also known as Cefadex. Polyacrylamide can be used, and dextran polyacrylamide can also be used. So these are the three types of the beads from which can be used as stationary phase, and each is available with a variety of different ranges of pore size in the beads. So each one of them, they are available in a different variety of the pore sizes, so permitting separation of macromolecules of different sizes. So a good stationary phase could have the following properties. So we need to know what could be an ideal stationary phase. It should not be it should be chemically inert. So it should be inert, like it should not impart some charge. It should be inert. So this stationary phase in the size exclusion chromatography must be inert, and it should be inexpensive to go with the running cost of the experiment, and it should not react with the component of this to be separated. So the components that are separated, it should not like the stationary phase should not react with those. It should not react with the eluent. So the eluent, it should not it should not react with the eluent as well, and it should be colorless, uniform in size and shape. So the uniformity is important in both in size and in shape, and it should be colorless, like okay, and it should be mechanically stable, like it should be a stable molecule. Like if the stationary phase is not stable, it will not be possible to do chromatography. So it should be mechanically stable. And okay, so who will explain now? तो मैं कर दूं? Dua, please. सबसे पहले हम लोगों ने स्टेशनरी फेज में ये देखा कि स्टेशनरी फेज एक्चुअली वो फेज होती है जो कि बीड्स पे कंसिस्ट करती है। अब बीड्स बेसिकली वो क्रॉस लिंकेज से बनते हैं, आपके पास पॉलीमर क्रॉस लिंकेजेस है। जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकेज होगी उतना ज्यादा पोर साइज कम होगा और उतने स्मॉल प्रोटीन्स उसके अंदर से मूव आउट कर सकेंगी। सिंपल प्रोसेस ये है कि जिन प्रोटीन्स का साइज सबसे ज्यादा वो सबसे लास्ट पे ल्यूट होंगी, जिनका रिलेटिवली स्मॉलर होगा वो थोड़ा बाद में होंगी, और जिनका बहुत ज्यादा होगा, जिस तरह कम्प्लेक्सेस होते हैं, बायो कम्प्लेक्सेस होते हैं, बायोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस, तो उनका स्टेशनरी फेज के अंदर हम सेफेडेक्स और पॉलीक्रिलामाइड वगैरह यूज करते हैं स्टेशनरी फेज को बनाने के लिए। और स्टेशनरी फेज के अंदर डिफरेंट रेंज होती है पोर साइज की, और हर पोर साइज जो है एबिलिटी होती है कि जिनका पोर साइज स्मॉल है वो स्मॉल प्रोटीन्स को परमिएबली मतलब उसको पास आउट करने के लिए एफिशिएंट होंगे, जिनका पोर साइज लार्जर है वो लार्जर प्रोटीन्स को एल्यूट आउट करेंगे। सिर्फ फिर स्टेशनरी फेज के अंदर सर्टेन पॉइंट्स थे कि आपके पास केमिकली एनोड होनी चाहिए, आपकी स्टेशनरी फेज जो है इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए, स्टेशनरी फेज जो है वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए आपके जो भी आप उसके अंदर अपना बायोलॉजिकल कंपोनेंट डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, स्टेशनरी है वो एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं, और स्टेशनरी फेज जो है वो कलरलेस होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज एंड शेप, और स्टेशनरी फेज मैकेनिकली स्टेबल होनी चाहिए। ठीक हो गया, it's good. Okay, and next to it is the gel categories and applications. So what kind of gels can be used? So soft gels like dextran is actually Cefadex or dextran. They are soft gels. Polyacrylamide gels are also soft gels. So they are used for separation of proteins. And semi-rigid gels are also used, for example, biobeads. And these biobeads, so they are a separation of non-polar polymers in non-polar solvents.
So non-polar polymers, like the polymers that are non-polar, so we will use non-polar solvents, the organic solvents in that case, and we can separate out these non-polar or polymers with these semi-rigid gels, and the example is bio beads. And the third of the type, the category is high rigid gel and glasses. So there are certain types of glasses being used for this thing, like zirconium and certain glasses. The separation of polar systems, so for polar system separation, high rigid gels are also used, but they are not so common. The common ones are, the soft gels are most common in our case. And they use dextrane, polyacrylamide gels, for instance. So dextrane, what is dextrane actually? They are homopolysaccharides of glucose residues. So homopolysaccharide of glucose residues. So it is prepared with various degrees of cross-linking to control pore size. So cross-linking is being made with these homopolysaccharides to make dextrane, and to control the pore size, the cross-linking, actually the control on over the cross-linking is being made. So procured as dry beads. So we can procure dextrane as dry beads, but these beads will swell when water is added. So this is common practice, and the trade name is Cephadex. So Cephadex is the trade name of the dextrane, and it mainly used for separation of small peptides and globular proteins with small to average molecular mass. So this is to separate small proteins and globular proteins and with small to average molecular mass. So dextrane is the best. So if you have peptides, opt for dextrane. If you have globular small proteins, opt for dextrane. And what about polyacrylamide? These gels are prepared by cross-linking acrylamide with bisacrylamide. So acrylamide or bisacrylamide, the cross-linking between the two is the polyacrylamide is made up of that, and the pore size is determined by the degree of the cross-linking. Again, the pore size is determined by the degree of cross-linking. The dextrane has the same story, polyacrylamide has the same story. So the cross-linking is the defining and has a defining role in determining the pore size. And the separation properties of polyacrylamide gels are mainly the same as those of dextrane. So the dextrane and polyacrylamide gel, they will behave the same in the separation, and they are sold as Biogel P. So this is the trade name for this, Biogel P. For dextrane, it was Cephadex, and for polyacrylamide it is Biogel P. So they are available in wide range of pore size as well. So in a wide range of pore size they are available. The third of the category is linear polymers of D-glucose. Agaroses, actually they are linear polymers of D-glucose and 3,6-N hydro 1 galactose. So this is not a homopolymer. That will be the mixture of galactose and 3,6-N hydro 1 galactose. So it forms a gel that held together with hydrogen bonds. So the gel, they will be held together through hydrogen bonds, and it's dissolved in boiling water. It will dissolve in boiling water and form the gel when the cooling temperature is achieved, and the concentration of the material in the gel determines the pore size. Now it is different. Previously, we have talked about that polyacrylamide gel, polyacrylamide, and dextrane, the pore size. What determines the pore size? The cross-linking actually determines the pore size. Now, in the case of agarose, the concentration of agarose actually determine the pore size. So here the concentration matters. In the previous case,
cross-linking, the previous two cases, cross-linking matters. The pores of agarose gel are much larger than those of Sephardex or biogel P, and it is useful for the analysis or separation of large globular proteins or long linear molecules such as DNA. So up till now it's clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and who will explain the three? Come on, who will explain? G. Kinza, please. Wait, you have to start from dextrane, yes. सर टेक्सटिन जो होता है वो होमोपोलीसेकेराइड होता है ग्लूकोज रेसिड्यू का और इट इज प्रिपेयर्ड विद वेरियस डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग फ्रॉम टू कंट्रोल द पोर साइड। इसके अलावा ये ड्राई बीड्स procured as a procured as a dry bead होता है और जो बीड होता है as वो swell हो जाता है by the addition of water और इसमें ट्रेड नेम होता है सेफेडेक्स और मेनली जो ये यूज होता है सेपरेशन ऑफ स्मॉल पेप्टाइड्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स और इसमें स्मॉल एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। उसके अलावा साइल अमाइड जो जेल होती है these जेल आर प्रिपेयर्ड बाय क्रॉस लिंकिंग एस्टेराइल अमाइड और इसमें एन मिथाइलिन बेस एस्ट्राइलमाइड होता है। द पोर साइज डिटरमिन होता है बाय डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग द सेपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड जो जेल होती है मेनली उसकी डेक्सट्रिन की तरह होती है और दे आर सोल्ड एज अ बायोजेल। दे आर अवेलेबल विद वाइड रेंज ऑफ पोर साइज। इसमें ज्यादातर पोर साइज रेंजेस होते हैं। और सर एग्रोसेल की बात हो रही है लीनियर पॉलीमरेज और बी गैलेक्टोज होते हैं इसमें 3,6 N हाइड्रो 1 गैलेक्टोज होते हैं। इट फॉर्म्स इसमें जो जेल होती है वो H बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। उसके अलावा it dissolve in boiling water and form gel when cold. The concentration of material in the gel जो होती है उससे हमें पोर साइज पता चलता है। उसके अलावा पोर्स ऑफ एक्रोस जेल जो होते हैं वो ज़्यादा लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू बायोजेल और सेपरेटिक्स और ये यूजफुल होते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन्स और लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल लाइक DNA। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक. And next is regarding the mobile phase. So in the mobile phase, the liquid used to dissolve the biomolecule make the mobile phase is usually a buffer. So मोबाइल फेज जिसमें हम लिक्विड यूज करते हैं उस लिक्विड को हम बफर कहेंगे, ठीक है. लाइक मोबाइल फेज हैज टू थिंग्स. One is our sample and the other is the solvent, and the solvent is usually known as buffer. So in that buffer, that will dissolve our biomolecules, that will dissolve our sample. And the mixture of biomolecule dissolved in the buffer is called the sample. सो जिस बफर में हम अपना सैंपल हम बायोमॉलिक्यूल्स हम डिजॉल्व करेंगे वो हमारा सैंपल है एक्चुअली. सो we will add sample to the solvent, means the buffer, and that will constitute and that will make up the mobile phase. That will be our mobile phase then. And the most common eluents for polymers that dissolve at room temperature, for example, tetrahydrofuran, chloroform, dimethylformamide, so DMF, chloroform, and dihydrofuran, they are the common eluents being used in the chromatography. And few things we will discuss later on in the coming class. So who will explain like what we covered today? सर मैं कर दूं? दुआ आप कर चुकी हैं नहीं, आप कर चुकी हैं कोई और? Like next I want some another one. Who will explain like
a different perspective. Harun is there. Harun. Osama. Osama. जी सर। जी उसामा आप एक्सप्लेन कर दें from where you will start from. Okay, from here. जी please. सर सर हमने टाइप्स ऑफ सर साइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने देखा सर। फर्स्ट जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी सर। इसके अंदर सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम यूज करते हैं एज अ मोबाइल फेज। तो सर जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया जाता है इसे सर। इसके अंदर सर हम हाइड्रोफोबिक कॉलम जो यूज करते हैं सर वो और नॉन एक्वस मोबाइल फेज होता है सर मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन को सब मेजर करने के लिए। सेकेंडली सर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं सर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सैंपल को कॉलम के थ्रू कॉलम के अंदर सर। सर इसको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं सर। वी यूज सर हाइड्रोफोबिक पैकिंग मटेरियल इन दिस एंड एक्वस मोबाइल फेस फॉर सेपरेशन और फ्रैक्शनेट करने के लिए सर मॉलिक्यूल को किस बेसिस के ऊपर सर वेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल की जो है ना उसकी बेस के ऊपर हम जो है ना सर वो करते हैं सेपरेट करते हैं। जेल फिल्ट्रेशन में हाइड्रोफिलिक यूज करते हैं। यस सर हाइड्रोफिलिक। प्रिंसिपल सर मिक्सर मॉलिक्यूल सर इसके अंदर सर हम होते हैं मोबाइल फेस के अंदर सर हम अप्लाई करते हैं क्रोमेटिक कॉलम के अंदर जिसके अंदर सर हम सॉलिड स्पॉट के यूज करते हैं सर माइक्रोस्कोपिक स्फीयर या बीड्स कहते हैं सर। उसके अंदर बीड्स जो है सर वो स्टेशनिंग फेस के अंदर होते हैं। देन सर मास ऑफ बीड सर जो होता है कॉलम के अंदर वो उसे हम कॉलम बीड कहते हैं सर। ये जो बीड होते हैं सर ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रैप और सर सीव की तरह सर, मतलब कि उसके अंदर जाके सर वो हो जाते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं और फिल्टर करते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल को सर जो जो है ना सर टेम्परेरी तौर पे जो है ना पोर्स के अंदर जो ट्रैप हुए होते हैं और स्टक हुए होते हैं। सर देन सर फिर हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की बारी आती है। लार्ज मॉलिक्यूल को सर पास करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम बीट से सर। लार्ज सैंपल मॉलिक्यूल जो है सर वो पास नहीं कर सकते और सर वो सिर्फ पेनिट्रेट करते हैं पोर्स को, जबकि सर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है तमाम पोर्स से सर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, एसेस कर जाते हैं। तो इसलिए सर लार्ज मॉलिक्यूल से इल्यूट फर्स्ट, लार्ज मॉलिक्यूल पहले हम वो कर देते हैं सर एक्सक्लूड कर देते हैं। देन स्मॉलर मॉलिक्यूल सर while molecule that can access all pores elute loss from the column. Particles of different size will elute through stationary phase at different rates. सर प्रोटीन मिक्सचर को हम ऐड करते हैं सर कॉलम के अंदर, जिसके अंदर हम क्रॉस लिंक पॉलीमर डालते हैं सर। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं सर वो हम उनको साइज के बेस के ऊपर सर लार्ज मॉलिक्यूल के बेस के ऊपर हम उन्हें सेपरेट करते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं सर वो फ्रीली जो है वो पास कर जाते हैं और पहले जो है ना सर वो उसकी फ्रैक्शन हो जाती है सर, वो एक्सक्लूड हो जाते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल सर वो पोर्स के अंदर जेल के अंदर सर वो इंटर होते हैं सर एंड वो स्लोली सर ट्रैवल करते हैं और इसलिए वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं और लेटर सर वो इल्यूट होते हैं। और सर मीडियम साइज मॉलिक्यूल होते हैं सर वो जो है बफर के अंदर सर वो मूव करते हैं एंड जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं सर वो जो है ना जल्दी और रैपिडली सर वो इल्यूट हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रैवल ज़्यादा स्पीड से करते हैं। देन सर हम कंपोनेंट देखते हैं इसके साइज एक्सक्लूजन के, उसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, कॉलम्स, पंप और डिटेक्टर्स 5 कंपोनेंट्स आते हैं। And now who will explain further? इसके बाद कौन explain करेगा?
उसामा ठीक है, थैंक यू। फातिमा, फातिमा रमजान, फातिमा यस रमजान सर। जी, इसके बाद आप एक्सप्लेन कर दें। सर इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स पढ़ी थी। स्टेशनरी फेज नहीं, इसके बाद ये यस सर, इसमें ये बताया हुआ है कि जो स्टेशनरी फेज है उसमें सेमी परमेबल पोरस बीड्स होती हैं जो डिफरेंट पोर साइजेस की होती हैं। नहीं, इनमें डिफाइंड रेंज ऑफ पोर साइजेस होते हैं और जो बीड्स होती हैं वो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होती हैं। और डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग जो कंट्रोल होती है वो डिफरेंट पोर साइजेस से होती है, मिलके बनी होती है। तो जो स्मॉल पोर साइज है वो रैपिडली देखिए, जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी देखें देखें, प्यूरिफिकेशन। इसको इस तरह कहेंगे कि पोर साइज हमने अगर स्मॉल पोर साइज करना है ना, लाइक पोर साइज स्मॉल रखना है, बीड्स अगर हमने खुद बनाने हैं, तो अगर स्मॉल पोर साइज रखना है तो वी हैव टू इंक्रीज द क्रॉस लिंकिंग को हमने बढ़ाना है, तो पोर साइज विल बी स्मॉल। अगर पोर साइज हमने लार्ज रखना है, हमने लार्जर प्रोटीन्स को इल्यूड करना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमने डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग को हमने कम रखना है, क्रॉस लिंकिंग को ज़्यादा नहीं करना, क्रॉस लिंकिंग जितनी कम होगी पोर साइज ने लार्जर होना है। And next is small pore size are used for rapid so प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के नॉर्मली यूज जो है लोग स्मॉल पोर साइज यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट व्हाट वाज नेक्स्ट, फातिमा? यस सर। हाँ, यू विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट एज वेल, दिस वन। सर इसमें ये बताया है कि लार्ज पोर साइज हैं वो यूज होते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। और हमने 3 टाइप्स ऑफ जेल्स पढ़ी थी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में, डेक्स्ट्रिन, पॉलीक्राइलामाइड एंड डेक्स्ट्रिन पॉलीक्राइलामाइड। और इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ पोर साइजेस होती हैं बीड्स की जो सेपरेशंस करवा सकती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की डिफरेंट साइजेस। और सर इधर ये बताया हुआ है कि जो गुड स्टेशनरी फेज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको केमिकली इनर्ट होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा एक्सपेंसिव से हम ज़्यादा सेपरेशंस नहीं कर सकते। और ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए कंपोनेंट के साथ कि उसकी अगर रिएक्शन हो जाएगा तो हमें हमारी सेपरेशन ठीक नहीं होगी। और इल्यून के साथ भी नहीं होना चाहिए इसको रिएक्ट। और ये कलरलेस होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए साइज और शेप के अंदर। और सर इसको मैकेनिकली स्टेबल होना चाहिए कि इसकी एनर्जी वेरिएशंस स्टेबल होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट होना चाहिए। And this next will who will explain the gel types? Fareen Puram is there. Fareen? यस सर, जी, आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है, आ रही है। सर इसमें हमने जेल की कैटेगरीज पढ़ी हैं, हमने 3 टाइप्स की कैटेगरीज पढ़ी थी। एक सबसे पहले ये था कि सॉफ्ट जेल्स हम यूज़ करते हैं, उसमें डेक्स्ट्रॉन और पॉली एक्रेलामाइड जेल्स होती हैं और ये बेसिकली प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए होती हैं। और दूसरी टाइप थी सेमी रिजिड जेल, जिसमें हम बायो बीड्स यूज़ करते हैं, सेपरेशन करते हैं हम नॉन पोलर पॉलीमर्स की इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और सर थर्ड टाइप थी हाईली रिजिड जेल्स इन ग्लासेस, दे आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ पोलर सिस्टम्स, बट ये इतना कॉमन नहीं है, आपने बताया था। हम ज़्यादातर सॉफ्ट जेल्स ही यूज़ करते हैं। फिर सर ये भी बता दूँ। जी जी। अच्छा सर, अब ये डेक्स्ट्रॉन बताया हुआ है कि ये बनता कैसे है। बेसिकली ये ग्लूकोज के रेसिड्यूज होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड। और सर इसको हम प्रिपेयर करते हैं वेरियस क्रॉस लिंकिंग से, और जो हम क्रॉस लिंकिंग करते हैं सर उसी से हम अपने पोर साइजेस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं, अगर हमें छोटा चाहिए या बड़ा पोर साइज चाहिए। और सर इसके अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं तो इनका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, और इसका ट्रेड नेम सेफ्रेटेक्स था और इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर सब्सटेंस पॉलीप्रोपेन। और सर इसमें हम स्मॉल पेप्टाइड से लेके लार्ज मॉलिक्यूलर मास के जो प्रोटीन्स हैं उनको भी सेपरेट कर सकते हैं।
सर फिर ये पॉलीएक्रिलामाइड है सर, इसका भी साइज हम क्रॉस लिंकिंग से चेंज कर सकते हैं। और सर ये बनता है ऐसे कि एक्राइलामाइड और बेस एक्राइलामाइड की जो हम क्रॉस लिंकिंग करते हैं। और सर इसकी सेपरेशन प्रॉपर्टीज जो है वो मेनली तो सेम डेक्सट्रन की तरह। और सर इसका ट्रेड नेम बायोजेल पी है और ये भी अवेलेबल होते हैं वाइड रेंज ऑफ पोर साइजेस में। और सर एगरोस था, इसमें ये था कि ये डिपेंड नहीं करता क्रॉस लिंकिंग पे, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर जितनी जेल की कंसनट्रेशन कम होगी पोर साइज बड़ा होगा, और जितनी अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो पोर साइज जो है वो छोटा होगा। और सर ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं डी गलेक्ट्रोज और 3,6 एन हाइड्रो 1 ग्लूकोज के। और सर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसे हम बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करते हैं, फिर जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो फिर वो खुद ही कोल्ड हो जाती है और सर फिर जेल बन जाती है। और इसमें भी जेल और सर इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन्स की और लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल्स की, जिसमें डीएनए भी हम कर सकते हैं फाइंड। ओके सर इसमें अब मोबाइल फेस का आपने सर लिक्विड यूज़ करते हैं टू डिजोल्व बायोमोलिक्यूल्स टू में। एक मिनट सर मुझे बफर। अच्छा सर इसमें आपने बताया था जो मोबाइल फेस है ना हमारे पास सर, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक बफर होता है, बफर हम यूज़ करते हैं कि हम उसमें डिजोल्व करेंगे अपना सैंपल। सर ये बताया था। ठीक हो गया, सही हो गया. So a few things remain. So previously we have discussed about the components of size exclusion chromatography. So first of the component that we have already talked about is the stationary phase, then the mobile phase, and then the upcoming is the columns, the pumps, and the detectors. So these are the components of chromatography. So we have covered the stationary phase, and then we have covered some of the gels in there. We covered these, and then the mobile phase, and these are the liquid that used to dissolve the biomolecules to make mobile phase is usually the buffer. Then we talked about the sample, which thing we will call as a sample, and then we talked about the most of the elements for polymers that dissolve at room temperature, like tetrahydrofuran and the other elements. And then the next coming is the columns. So so we need to know that increasing the column length, like how much the size of the column should be, like what should we select for the column length, like how much length we need to have in a chromatography. So by increasing the column length will enhance the resolution. So if we need better resolution and better result, better separation, we need to have a longer column length, and increasing the column diameter, that's increasing the capacity of the column. So more the dia, the more sample can be used. So these things we need to keep in mind, but these already also has disadvantages linked with. And the next is column with different porosity are mixed bed columns, like the columns that have a mixture of porosity, like and they have different types of beads, and the size exclusion differs. So that provides a better separation. So the column that has uniform, that means that column that has uniform porosity is the column that has different porosity will be more they will provide better results and better separation in comparison with the column that have same porosity. So, and next is a proper column packing is important to maximize resolution. That means like if the column is overpacked with the beads,
then what will happen? An overpacked column can collapse the pores in the beads. So pores collapse could occur, resulting in loss of resolution. But if we if we use underpacked column, like if it has less than the required beads, what will happen? It will reduce the relative space surface area of the stationary phase. It means the surface area will be reduced. That will mean the most of the space will be free from the beads. So what will happen? So can reduce the relative space surface area of the stationary phase accessible to smaller species. So the resulting in those species spending less time trapped in pores. So they will elute earlier than the columns that are properly packed. So this is what the column length. So if you conclude this slide, so the column length is important. The column diameter is important. If we use a column with a different porosity, that will have better separation. And if the column is overpacked, that will collapse the pores. If the column is underpacked, that will reduce the surface area, and that's it. Is it clear? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, who will explain? Kalimullah. Kalim? यस सर जी जी प्लीज सर हमें इसमें ये बताया गया है अगर हम एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अगर कॉलम की लेंथ इंक्रीज करें तो इसकी रेजोल्यूशन बेटर हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। अगर हम समझ इसका डायमीटर इंक्रीज करते हैं तो मोर कैपेसिटी हो जाएगी, हम ज्यादा से ज्यादा सेपरेशन कर सकते हैं मटेरियल की। दूसरा इसमें ये बताया गया कॉलम डिफरेंट पोरोसिटी मींस के कि कैसे पोर्स एम्प्टी स्पेसेस होंगे, तो अगर ज्यादा पोर्स होंगी तो बेटर समझो सेपरेशन होगी। दूसरा बताया गया कि इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम जो कॉलम पैक्ड हैं तो कि उसकी जो रेजोल्यूशन है वो लेस हो जाएगी। अगर वो अंडर पैक्ड हैं, ओवर पैक्ड हैं तो लेस लॉस हो जाएगी। अगर ओवर पैक हैं तो अंडर पैक हैं तो वो बेस्ट हो जाएगी। अंडर पैक columns can reduce the relative surface area stationary phase means कि उसका जो क्या कहते हैं उसकी वर्क करने की कैपेसिटी बेस्ट हो जाएगी अंडर पैक में। थोड़ा सा उल्टा नहीं हो गया? देखिए इसका ये मतलब है, थोड़ा सा अगर मैं दोबारा समझा दूं, आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि इफ द सेल हैज वेसिकल्स इन देयर, ये अगर क्रिस्टी है सेल के अंदर, सो और दूसरा सेल हमारे पास है उसमें क्रिस्टी नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स नहीं है और दोनों के साइज सेम है, किस में सरफेस एरिया ज्यादा है? इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है या इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है? अगर हम सरफेस को काउंट करें, सर क्रिस्टी वाले में इसमें सरफेस ज्यादा एरिया ज्यादा है, इवन दो द साइज ऑफ बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम। अगर हम दोनों साइज कंसीडर कर लें तो साइज सेम है, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, सो इसी तरह कॉलम के अंदर है, अगर कॉलम हमारे पास है एक, तो कॉलम के अंदर अगर हम बीड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। मींस के अगर मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है इन बीड्स के थ्रू तो वो सरफेस एरिया उनको ज्यादा वो होगा। मींस के दे विल फेस मोर सरफेस एरिया देन द कॉलम दैट हैज लेसर बीड्स, लाइक थोड़े से बीड्स हैं उसमें, तो उसको सरफेस एरिया बहुत कम होगा। They can move easily from these molecules without trapping in the beads because the surface area is reduced. आपको समझ आ रही है? Yes sir. So Kalimullah, Yes sir. and the rest of the class, मैं Kalimullah आपको नहीं कर रहा, like मैं आपके थ्रू पूरी क्लास में कहना चाह रहा हूँ, like ये देखें कि अगर ओवर पैक्ड है तो that will increase the surface area, लेकिन उसके साथ क्या होगा
कि जो पोर्स हैं वो कोलैप्स होने का खतरा है। लेकिन अगर अंडर पैक्ड है, मीन्स के बीट्स बहुत ज्यादा कम है, मीन्स के प्रॉपर पैक नहीं है, कम है, तो उससे क्या होगा, relative surface area of the stationary phase will reduce. उसमें क्या होगा, accessible to smaller species, so and the smaller species जो like the liquid media like mobile phase में जो sample है हमारा, तो वो बहुत जल्दी मूव कर जाएगा, resulting in those species spending less time trapped in the pores. तो वो जो pores में जितना टाइम उन्हें गुजारना था तो वो नहीं गुजारेंगे, वो जल्दी पास ऑन हो जाएंगे। So that is not better. हम चाह क्या रहे हैं, what our requirement is, like what we need is, we want to, we have different size of samples, हमारे पास different size के samples हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हम ये सारे सैंपल जो हैं ये साइज के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक बीड है और इस बीड में लाइक दिस इज द पोर्स विद इन द बीड, सो अब हम ये चाह रहे हैं कि ये छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट ट्रैप इन द बीड्स, ये बीड्स में ट्रैप कर जाएं, ये बाद में मूव करें, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्स्ट मूव करें, ये पहले मूव कर लें, ताकि हम इनको सेपरेट कर सकें, इस सैंपल में से जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट कर सकें फ्रॉम द स्मॉलर वन। सो वी नीड टू हैव अ सिस्टम जिसमें हम इसको सेपरेट कर सकें। अगर ओवर पैक्ड है तो पोर्स जो है वो बंद हो जाने, कोलैप्स हो जाने हैं, अगर अंडर पैक्ड है तो उसमें surface area कम हो जाना है, और the smaller molecules cannot trap in the beads, and they will move on and they will pass on with the larger molecule के साथ इकट्ठे ही dilute हो जाने हैं, ठीक है। So most probably because the column will also hinder in the movement of larger and smaller molecules, but normally they will elute earlier, the smaller will elute earlier, and we cannot better separate the smaller from the larger ones. Am I clear or not? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक हो गया, कौन एक्सप्लेन करेगा अब इसको? मैं करूँ? जी प्लीज हो गया। सर यहाँ पर हमने कॉलम्स के बारे में पढ़ा है कि इसमें जो है वो हम लोग जब कॉलम की लेंथ इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी सेपरेशन बेटर हो सकती है, और इसी तरह अगर हम कॉलम का डायमीटर इंक्रीज़ करें तो इससे साथ साथ हमारी कॉलम की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। और अगर हम लोगों ने बेटर सेपरेशन करनी है तो उसके लिए हम डिफरेंट कॉलम बीट्स यूज़ करते हैं, ताकि उनकी जो है वो पोर्स डिफरेंट होंगे तो ज़्यादा बेटर सेपरेशन होगी। इसके अलावा दो जो है वो इसकी रेजोल्यूशन को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर कॉलम पैकिंग होनी चाहिए, लेकिन दो इसमें चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम ज़्यादा कॉलम्स ज़्यादा पोर्स यूज़ कर लेंगे तो इसमें ओवर पैक्ड कॉलम हो जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन साथ साथ कॉलम पोर्स जो हैं वो कोलैप्स भी हो सकते हैं और बेटर रेजोल्यूशन नहीं होगी। और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हम देखें तो अगर हम ज़्यादा अंडर पैक्ड कॉलम यूज़ करते हैं, यानी इसमें पोर्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो एक तो सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो रहा है और हमारी जो बेटर सेपरेशन है वो भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो हमारे सैंपल है वो पोर्स के अंदर ट्रैप नहीं कर पाएगा ज़्यादा टाइम के लिए। सही। ओके, एंड next to it is shorter column save time and solvent. So we have talked about the significance of using longer columns, but shorter columns जो है अगर column length हम increase करते हैं तो that will enhance the resolution, but will cost us for the time and the solvent. So shorter column will save time and solvent. So if we use shorter columns, that will save our time and the solvent as well. And small particles, typically 5 millimeters, they provide better resolution. So the smaller particles, they provide better resolution. And on the other hand, 5 millimeter or even 3 millimeter packing is more sensitive towards contamination by sampling containing impurities.
तो सैंपल में अगर इम्प्योरिटीज हैं तो उन्होंने क्या करना है, इन कॉलम के पैकिंग को, they are sensitive towards the contamination. They block the columns, and the column are not like they are not like feasible for separation then. So they are more sensitive, like the 5 millimeter packing is more sensitive, like or 3 millimeter is more sensitive. अगर हम इसको reduce करते हैं so like 5 millimeter तक है, so they give better resolution, but they are more sensitive to the contamination. So इसका मतलब है कि अगर हम larger pore size use कर लें तो that is better. And isocratic क्या है, that is a column set of size exclusion chromatography should always run in the same mobile phase. अगर हम mobile phase concentration same रखें, constant रखें, that will mean isocratic. So isocratic column कौन से होते हैं? That is a column set in size exclusion chromatography that always use the same mobile phase. मोबाइल फेज कंसंट्रेशन अगर सेम रखें हम throughout, so so that will be an isocratic system. In contrast, we have a gradient system, and that refers to maintaining a varying concentration of the mobile phase. If we change the concentration of the mobile phase, that will be a gradient system. So there are two systems now, isocratic and the gradient. Isocratic having the same mobile phase concentration, and gradient means varying concentration in the mobile phase. Is it clear? Yes, sir. So next is the difference between the preparative column and the analytical column. So we have two types of columns now, the preparative and the analytical. What actually preparative column means, that is a form of separation of solute, like इसको simple we can understand from here, to start from here. If we want to do chromatography on the large scale, go for preparative chromatography, a preparative column. If we use chromatography on a smaller scale, use analytical chromatography or analytical column. Second, the main purpose is to isolate and purify a reasonably sufficient quantity of a particular substance from a mixture. So keep in mind that what it says isolate and purify, isolate and purify. So here in this case, we are isolating and purifying, but here the main purpose is to determine the presence of a relative proportion of analytes in a mixture. So what's the difference now? The difference now is to here we need to isolate and purify the components of a mixture, but here we don't have to isolate, but only we need to determine, to identify which component is there in a mixture. And this is for HPLC, high performance liquid chromatography, LC and GC, liquid chromatography, and gas chromatography are the chromatographic techniques involved in there. But here, paper chromatography, TLC, thin layer chromatography, they are involved. Both sample number and sample volume are high. So here we need to increase the sample number, the number of samples. Also, we need to have high volume because we have to isolate the components. So we need more volume of the sample. The sample number and sample volume is less in there. Column diameter is typically 250 to 200 millimeter range in LC. The column diameter is 4.6 to 2.1 millimeter range only. Here you can see this is 50 to 200, and here just 4.6 to 2.1 millimeter. Here is 200 millimeter. So it's a huge difference in the columns dia in the two things, in the two different chromatographic techniques. So long columns are better, short columns are sufficient. So here short columns are sufficient. Like here we need to have longer columns.
So products may not even be collected here. Here, what we will do, please try to understand the products are used in downstream processing. So here we will separate the mixture. We will identify the components of a mixture. We can separate them. We can isolate them separately. But here we will not collect the results. We will not collect the resulting products. So we will not collect the products actually. And here we will collect the products in preparative chromatography. We will collect the products. So who will explain? जितनी समझ आई है वो explain कर दें. सर मैं कर दूं? जी please. सर ये दो टाइप की टेक्निक्स हैं, एक प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी और एक एनालिटिकल। और अगर हम लार्ज स्केल पे क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो फिर हम प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी करेंगे, बट फॉर द स्मॉल स्केल अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर हम एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। जो प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी है उसका मेन पर्पज है सेपरेशन करना, आइसोलेशन करना जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स या फिर कंपोनेंट्स हैं सैंपल में। और जबकि जो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी है उसमें उसकी हमने प्रेजेंस देखनी है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, और या फिर उसकी प्रोपोर्शन डिटरमिन करनी है कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी में हम डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज करते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC। और जबकि एनालिटिकल में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड गैस ये वाली सारी यूज करते हैं। प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी में हम जो सैंपल होता है उसका सैंपल नंबर और उसका वॉल्यूम जो होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि वैसे भी हम ये लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, जबकि एनालिटिकल में सैंपल नंबर और वॉल्यूम जो होता है वो लेस होता है। और जो प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी है ये सैंपल नंबर हाई है, सैंपल नंबर सैंपल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हम इसका कॉलम जो होगा उसका डायमीटर भी ज्यादा होगा, वो 50 to 200 मिलीमीटर उसकी रेंज होती है, जबकि एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी में 4.6 to 2.1 की रेंज होती है, वो इनफ होती है। और उसके बाद प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी में लॉन्ग कॉलम्स जो होते हैं वो बेटर रिजल्ट देते हैं, रेजोल्यूशन अच्छी देते हैं, जबकि एनालिटिकल में शॉर्ट कॉलम्स भी उनके साथ भी हमारा रिजल्ट जो होता है वो ठीक आ जाता है। और प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी में हमने सेपरेशन किया है सैंपल्स की, तो उनको एंड पे वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सैंपल्स को हमने सेपरेट आउट किया है। जबकि एनालिटिकल में हम बस उसकी प्रेजेंस देख रहे थे, तो उसमें हम सैंपल्स एंड पे प्रोडक्ट नहीं कलेक्ट होता। Great. So इसको एक दफा देख लें for the whole class. What we do actually is like अगर हमारे पास एक सैंपल है और वो सैंपल is a combination of protein A, B, C and G. These 4 types of proteins are present in our sample. So what we will do, either we need to go for preparative columns or for an analytical column. What we should prefer? Preparative. Preparative. Why? Why preparative? Why preparative or why analytical? सर हमारे पास ज्यादा मिक्सचर है सैंपल्स का, इस वजह से। Like अगर हमारे पास एक मिक्सचर है A, B, C, G 4 proteins हैं, so what we do, either we need to prefer preparative columns or we need to go for an analytical column. So अब इसको समझ लें। Like अगर हमारे पास 4 प्रोटीन्स हैं एक ही सैंपल के अंदर, एंड हमारा मकसद ये है कि मैं क्वांटिफाई कर सकूं, मेरे पास एक ब्लड सैंपल है और उस ब्लड सैंपल में मेरे पास 4 प्रोटीन्स हैं और मैं उसको क्वांटिफाई करना चाह रहा हूं कि ये कितनी लाइक क्वांटिटी कितनी है, तो कितने नैनोग्राम्स हैं, ये कितने नैनोग्राम्स हैं, ये कितने नैनोग्राम्स हैं, ये कितने नैनोग्राम्स हैं। So I want to quantify. Yeah, I want to detect either this B is present or not. ठीक है, so मैं ये क्वांटिफाई करना चाह रहा हूँ, जस्ट क्वांटिफाई करना चाह रहा हूँ। So what I will do, I will go for analytical chromatography. ठीक है, but if I want to separate all these 4 proteins, and because I need them separately in different vials now, मुझे ये separately 4 vials में different vials में चाहिए, because I want to use them in further experiments. So what I will do,
I will go for preparative chromatography, preparative column, because I will separate them out. मैं इसको column में से जब pass करूँगा, so वहाँ पे मेरे पास different steps पे ये आएंगे चार. Because they can on the sides, they will be separate. So this will be like if I say it like if this is the C, यहाँ पे ये वाला जो है, this will be B, और ये मेरे पास B वाले स्टेप पे आ जाएगा, ये मेरे पास सबसे आखिर में आ जाना है, ठीक है, elute हो जाना है. This is A, and this will be the first to elute. These are the larger molecules, the larger protein, and this is the D. So now I collect them separately. So if the purpose is to isolate or purify different components from a sample, so I will go for I will go for preparative. ठीक है, so अगर purpose मेरा isolation है, so go for preparative. अगर purpose मेरा सिर्फ और सिर्फ detection है, I want to detect either these proteins are in there or not, so that is analytical. So that is done on the large scale. ये भी एक difference है, done on the small scale. लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें, purpose is to isolate and purify. So that is preparative. लेकिन यहाँ पे just want to determine the presence and relative proportion of the analytes in a mixture. So just मैं relative proportion देखना चाह रहा हूँ कि concentration कितनी है एक दूसरे सबकी, ठीक है. So I will go for analytical then. Am I clear to the whole class? Yes, sir. Yes, sir. So who will explain? सर मैं कर दूं? Dua, please. सर आपने बताया कि अगर हम 4 प्रोटीन्स लें, प्रोटीन ए, बी, सी एंड डी, तो अगर तो हमारा पर्पस ये है कि हमने प्रोटीन की आइसोलेशन करनी है और उनको डिफरेंट वायल्स में कलेक्ट करना है, या हमने उन प्रोटीन को सेपरेट आउट करके आगे फर्दर प्रोसेसेस के लिए यूज करना है, तो हम प्रेपरेटिव की तरफ जाएंगे. अगर हमारा पर्पस ये है कि सिर्फ हमने प्रोटीन की प्रेजेंस, इन चारों प्रोटीन की प्रेजेंस और इनकी सिर्फ कंसंट्रेशन की कितने नैनोग्राम्स में है वो फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम एनालिटिकल कॉलम की तरफ जाएंगे. अगर हमने आइसोलेट एंड प्यूरिफाई करना है तो फिर हम प्रेपरेटिव की तरफ जाएंगे. ये हमारे लिए बिल्कुल प्यूरिफिकेशन मेथड है. ठीक है. So अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है products obtained are used in the downstream processing. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं इसमें प्रेपरेटिव में. लेकिन यहाँ पे क्या हो, एनालिटिकल में प्रोडक्ट्स में नॉट इवन बी कलेक्टेड. प्रोडक्ट्स को कलेक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ रन किया जाता है, देखा जाता है कि प्रेजेंस है कि नहीं है, एंड दैट्स इट. So these are the main differences between preparative columns and analytical column, or preparative chromatography and analytical chromatography. One more thing, यहाँ पे अगर हमने preparative chromatography करनी है, the columns need to be longer. Columns बहुत लंबे होने चाहिए, like the length of the column should be more, the dia should be more. ठीक है, तो longer columns, dia should be more, but here we need the short columns are sufficient. Dia is also smaller. So these are the main now differences between the two. So after Dua, who will explain? I need to confirm, like, it's clear for all the class or not. Who will explain? Come on. Come on, class. Osama, you there? Yes, sir. Please explain, Kareem. Sir, we have studied preparative chromatography, analytical chromatography, sir. Sir, basic difference both in preparative chromatography use करते हैं सर जब हमने large scale के ऊपर सर वो करना हो separation, and analytical sir we use when we have to separate out small molecules. तो सर एनालिटिकल के अंदर हम सर पेपर यूज करते हैं सर, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जैसे TLC हो गया, GC हो गया, LC हो गया सर.
और वॉल्यूम सर इसके अंदर हम लेस रखते हैं एंड कॉलम डायमीटर शुड बी टिपिकली 4.6 to 2.1 millimeter. Okay, and small molecule नहीं करते, small scale पे करते होते हैं. Okay, and the rest is okay. So who will explain next? Khansa is there. Khansa? Fareen Furam, जी Fareen. जी सर मैं आपने आपसे ये पूरा पूछनी explain कर सर एक बात पूछनी सर, ये जो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल है सर, मतलब इसका ज़रा बता दें कितना लार्ज हो सकता है, मतलब प्रोटीन्स की बेस पे कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं? ये असल में अगर इंडस्ट्रियल बेस पे है ना, इंडस्ट्रियल बेस पे कोई हमारे पास सैंपल आते हैं और इंडस्ट्रियल बेस पे है, हम लार्ज स्केल पे कोई बल्क ऑफ सैंपल है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को हमने सेपरेट आउट करना है, बाकी को डिस्कार्ड करना है, तो उस केस में किया जाता है। और ये जो दूसरा है एनालिटिकल, इसमें सैंपल साइज बहुत ही कम होता है, जस्ट हमें देखना होता है कि फॉर इंस्टेंस एक ब्लड सैंपल में या किसी भी सैंपल में मिक्सचर में कितना लाइक है मौजूद है, प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन मौजूद है कि नहीं है, या अगर है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। सो एक्सपेरिमेंट आर बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द लाइक द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। सर यानी कि हम इस बेस पे कह रहे हैं कि जो उसकी वर्किंग है। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर मैं एक्सप्लेन करूं? जी नौरीन प्लीज। सर यहाँ पर आपने दो क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंस बताया है। सबसे पहले प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी और दूसरी तरफ हमारे पास एनालिटिकल है। प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी जो है हम लोग लार्ज स्केल के लिए यूज करते हैं, अगर हमारा सैंपल लार्ज है, उसका साइज लार्ज है, तब हम यूज करते हैं। और एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी हम स्मॉल स्केल के लिए यूज करते हैं। अब प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग आइसोलेशन करते हैं, किसी भी चीज को अगर हमने सेपरेट करना हो हमारे मिक्सचर के अंदर से, तो हम लोगों ने जो है प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी करनी है। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल में बताया कि हमारे पास 4 प्रोटीन है ABCD, और हम इन चारों प्रोटीन्स को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो हम लोग इस क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ डिटेक्ट करें कि ये प्रोटीन जो है वो हमारे मिक्सचर में कौन कौन सी प्रेजेंट है, और क्वांटिफाई करना चाहते हैं, डिटरमिन करना चाहते हैं उनकी प्रेजेंस को हमारे मिक्सचर के अंदर, तो हम लोग एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग अगर प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी के अंदर आ जाती है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जो एनालिटिकल है उसके अंदर TLC आ जाती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, और मजीद इसमें जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। इसी तरह अगर प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी का सैंपल का साइज देखा जाए तो वो ज्यादा होता है, उसका नंबर ज्यादा होता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में एनालिटिकल का जो सैंपल का साइज और जो नंबर और वॉल्यूम है वो लेस होता है। इसीलिए हम लोग प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी में अगर सैंपल नंबर और वॉल्यूम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका जो कॉलम का डायमीटर है वो भी जो है वो 50 to 200 मिलीमीटर रेंज के अंदर होगा। लेकिन जो हमारी दूसरी तरफ एनालिटिकल है उसका डायमीटर कम होगा। और हम लोग लॉन्ग कॉलम यूज करते हैं प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी में, लेकिन एनालिटिकल में हमारे यहाँ जो कॉलम जो होती है वो सफिशिएंट होती है, शॉर्ट कॉलम्स होती हैं, शॉर्ट कॉलम हमारे लिए होती हैं। लेकिन जो प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी उसके अंदर हम लोग अब आइसोलेशन कर रहे हैं, तो आइसोलेशन में जाहिर सी बात है एंड पे हम लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि हम एक चीज को आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक चीज सिर्फ डिटर्मिन कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस देख रहे हैं, तो उसमें हमें प्रोडक्ट नहीं एंड पे मिलेंगे। तो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग को लास्ट में प्रोडक्ट नहीं मिलता। एग्जैक्टली हम प्रोडक्ट कलेक्ट नहीं करते एग्जैक्टली। यस सर। After that, okay, so next is the pump. So this is also the component of the chromatography. So a high constant flow rate has to be maintained during the entire chromatogram. So this is very important. So constant flow rate is also important. So along with the like considering all other aspects like the column length, the column dia, and the packing of the columns, and the overpacking or the underpacking. So we have to check all these things. We have to consider all those things as well. But we have to check either the flow rate is constant or not, because this will also affect the results. So
A highly constant flow rate has to be maintained during the entire chromatogram, and this is important actually. And a change of flow rate of only 0.1 can cause an error in molar mass of up to 10%. So 0.1 percent can cause an error in the molar mass of up to 10%. So this is how the flow rate is important. So, and next is the detectors. So the detectors is the concentration, they are concentration sensitive detection. So there are different detection methods, different with different chromatographic types. There are different methods of detection, like concentration sensitive detectors. So the detector is to detect our results actually. So how we can detect there in the chromatography, how the results are detected. So based on the concentration sensitive detection. So one of the method is concentration. So it will detect the concentration of our results, our products. So this is concentration sensitive detection, and where it can be used, it is used. It is normally used in UV absorption. So in UV absorption, normally concentration, there are the detectors are concentration sensitive. They determine the concentration of the products or the results. And the second type of the detectors are molecular mass sensitive detectors, and they detect the viscosity of the sample. So this is the second one. They detect the molecular mass. They do not detect the concentration. They detect the molecular mass, and so they are molecular mass sensitive detectors. So viscosity detectors are there. The third one, the others, some of the others detectors can be used, for example, in FTIR, Fourier transformed infrared spectrometer. So in FTIR, there are different detectors than the concentration and the molecular mass. So these are the detectors. So different detectors are used in different chromatography, and that's it. And with this, our chromatography topic is complete.